देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे मोबा वोबा क्लैश सीरीज पे। और उसी के साथ आज के ये मैचेस जो होने वाले हैं वो तड़कते भड़कते। मैं हूँ आपका कास्ट सचिन और मेरे साथ कास्टिंग करने के लिए जुड़ेंगे मेरे प्रिय मित्र एसटीजी। तो जानते हैं उनसे क्या हाल चाल चल रहे हैं। तो एसटीजी भाई, क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके? बहुत ही बढ़िया भाई। लेकिन कुछ खबरें आ रही है जो हैरान कर रही है मुझे, बट कोई बात नहीं, संभाल लिया जाएगा क्योंकि यही तो दस्तूर है जिंदगी का। जिंदगी ऐसे ही अचानक से आपको सस्पेंस भरी चीजों से भर देती है, उसके बाद आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। और आप भी उसके हिस्सेदार है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा कुछ। तो दोनों ही भाई को सस्टेन करना पड़ेगा कल से। लेकिन जस्टिस बनाम टीम और इंक्यूबेटर, इन दोनों का गेम बहुत अच्छा होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए पहला गेम है आज के मोबा वार्म अप क्लास सीरीज का। तो हमने पिछले हफ्ते दो BO3 किए थे। दो या तीन BO3 था शायद, सॉरी, तीन BO3, माफ कीजिएगा। आज हम 6 BO1 करने वाले हैं, जस्ट बैक टू द ओजी एरा ऑफ वार्म अप क्लास सीरीज। ये सबको मिलना चाहिए मौका। 12 टीम आज खेलने वाली है मोस्टली। तो ये और इंक्यूबेटर जस्टिस दोनों ही टीमें नहीं है, तो इनके बारे में मैं इतना कुछ तो नहीं जानता हूँ। बट आई बिलीव कि वो मेटा को फॉलो कर रहे होंगे और मेटा के साथ ही उतरेंगे, क्योंकि दिस मे बी देयर फर्स्ट गेम एट अलगैम्बो स्पोर्ट्स मोबा वार्म अप क्लास सीरीज। क्योंकि जब से हमने वार्म अप क्लास सीरीज स्टार्ट किया है और हम दोनों कास्ट करते हैं, मैंने कभी इन टीम का नाम नहीं सुना वार्म अप क्लास सीरीज में। शायद से वो एलिट स्क्रीम या फिर जो बैटल फॉर क्राउन था उस पे पार्टिसिपेट किए होंगे। लेकिन यहाँ पे पहली बार ही, और ये देखिए पहली पिक ही थोड़ा मेटा ओरिएंटेड है। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिक्कत देती है मुझे कि फर्स्ट पिक फेडरन लिया है शिनरा भाई, जिसके कारण आपको शायद से बर्स्ट या ट्रू डैमेज हीरोज के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। देखिए, नाम लिया हीरो हाजिर भाई। ये बिल्कुल वो पोक वहां से आता हुआ दिखेगा हमें इमेज की साइड से। उसके साथ साथ टैंक मैचर कैरी, उनका आगमन होगा। और इंक्यूबेटर इस समय वो अपने पिक्स के साथ थोड़ा सा और बढ़ाती हुई दिख रही है। दूसरी साइड बात करें टीम जस्टिस, उनके पास थोड़ा सा मौका चाहिए उनको कि एक अच्छा खासा स्टन दे पाए, या फिर एक सप्रेशन अगर आ जाता है टीम जस्टिस की तरफ से तो वो अच्छी वाली बात होगी। दूसरी साइड की बात करें, यहाँ पे वैलेंटीना उठाया जाएगा और उसी के साथ सोरा यहाँ पे उठाया जाएगा, जो सेट लगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अभी भी मैं कहूंगा वैलेंटीना आपने उठाया है, चलिए ठीक है। आप यहाँ पे जो एक अच्छा खासा एक कैसे कह सकते हैं कि फोर्स ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं सामने वाले एनिमीज को, ताकि वो वैसे वाले हीरोज ना उठा पाए। आपने दो हीरोज आपने उठा लिए, चलिए वो भी बढ़िया है। लेकिन आपको अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है सप्रेशन की, क्योंकि कैरी की अगर पोजीशन यहाँ पे अगर अच्छी सी हो गई तो उसके बाद आपको फिर तुरंत मेल्ट कर दिया जाएगा। आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा बैकडोर होने का, इतना स्लो डाउन आपको मिलेगा। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़त वो करने की जरूरत है। अब बात करेंगे यहाँ पे, फोबियस उठा लिया गया है, चलिए। यहाँ पे मेन सोर्स यहाँ पे जाएंगे फोबियस फ्रंट लेन की तरफ। तो फ्रंट लेन पे खेलते देखेंगे बैकडोर से थोड़ा पोक मेच की तरफ से, और जो डैमेज डीलर है वो हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। बैन सेक्शन की बात करें तो गुशन बैन होता हुआ जा रहा है। हालांकि देखते नहीं है हम टूर्नामेंट्स में इतना, लेकिन गुशन वो थोड़ी सी दिक्कत दे जाता है। मिड लेन की तरफ भी खेल लिया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मिड लेन में बहुत ज्यादा गुशन चल रहा है। लेकिन देखते हैं आगे और क्या बैन आती है। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बैन मैं कहूंगा एटलस यहाँ पे आए, सोचा नहीं था कि एटलस आने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे इनको बैन कर दिया एटलस बैन। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एसटी जी? क्लास अभी मेटा पे चल रहा है शिनरा भाई, मोस्टली लाइक वो जो सी क्रिएचर वाला आपका स्किल है, उससे आप इजीली मतलब निकल सकते हो इन बैड सिचुएशंस या फिर बैड टीम फाइट पोजीशन से। और साथ ही साथ आप एक फैक्टर लिंक से 3-4 बंदों को जो है एक साथ सेटअप दे सकते हो। सो ऑब्वियसली ये अभी बहुत ही अच्छा हीरो साबित हो रहा है, मेटा में चल रहा है। और ये आप एक बात सोच रहे होंगे कि क्या अगर मेज ने प्यूरिफाई ले लिया या फिर MM ने प्यूरिफाई ले लिया, तो प्यूरिफाई ले लेंगे एटलास के लिए, बट लेन टू लेन मैचअप में उनको प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस काइंड ऑफ अ फोर्स स्पेल पिक भी करवा सकता है सामने वाले के बैकलाइनर्स के साथ। तो अगर आप प्यूरीफाई जा रहे हो एंड अटलास से बचने के लिए यूज कर दिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो अटलास के साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ यूटिलिटी जंगलर भी यूज होता है, हमें देखने को मिल रहा है। बाक्शिया हो गया, फिर अकाई हो गई, ऐसे कुछ हीरोज भी यूज हो रहा है। जो हमने देखा कि MPL आईडी में BTR ने अटलास रोम लेकर कितना अच्छा प्रदर्शन दिया अगेंस्ट की बॉयज रोम। जो कि मैंने कल भी बात जब मैच हो रही थी, MPL आईडी की फाइनल्स हो रही थी, तब मैं बात कर रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये रोम के बीच में गैप दिख रहा है जिसके कारण वो नहीं खा रही है। तो इसलिए मे बी द रीजन, दैट्स द रीजन की फॉलो कर रही है टीम जस्टिस टुवर्ड्स द MPL एंड इंटरनेशनल मेटा। दैट्स द रीजन दे बैंड दिस एट लास्ट ईयर।
बट उनके तरफ से यहाँ पर क्लिंट आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है अगेंस्ट अ कैरी। क्लिंट एक नेचुरल काउंटर है, लेन टू लेन काउंटर है उनके, बट एट द सेम टाइम स्नोबॉल वाइज कैरी को थोड़ा ज्यादा स्नोबॉल मिलेगा लेट फेज में। फोबियस एज अ काउंटर लिया गया है सोरा के लिए, लेकिन ये सुयू वाला पिक थोड़ा सा मुझे रैशनलाइज लग रहा है, बिकॉज मैं आशा कर रहा था कि बाक्शिया आएगा फ्रॉम ऑरा इंक्यूबेटर। करेंटली जो मेटा प्रेफर कर रहा है वो है यूटिलिटी, तो होपफुली मुझे चाहिए था कि एक बाक्शे विथ किमी, बट दे वेंट फॉर अ जीटीएन एंड सुयू। देखते हैं मैच कैसा निकलता है उनके लिए, बिकॉज थोड़े से जो है वो डैमेज के साथ ज्यादा गए हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सस्टेन एंड हील है, क्योंकि कलेया सस्टेन दे सकती है, सोरा विल बी इन द सस्टेन फेज एज वेल, सो डू द फेडरन। रही बात वैलेंटीना की, तो वो यहाँ पर खलीद या फिर फोबियस की अल्टीमेट भी ले सकती है, साथ ही साथ जेटियन की अल्टीमेट भी उनको मिल सकती है। तो आई फील लाइक कि जस्टिस की ड्राफ्ट थोड़ी सी अच्छी है इफ यू गोना कंपेयर इट विद ऑरा इंक्यूबेटर। बट देखते हैं क्या होने वाला है। ऑरा इंक्यूबेटर क्या वो आज अपनी ऑरा को जो है इंक्यूबेट कर पाएंगी, या फिर टीम जस्टिस फाइनली जस्टिस देने वाली है अपने टीम के लिए गेम 1 को जीत कर। तो स्वागत है देवियों सज्जनों आप सभी को एल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स के इस मोबा वार्म अप क्लास सीरीज में। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने एल्गैम्बो फैमिली का, तो फिर क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहले से ही हमारे फैमिली के हिस्से हो तो भाई आपको ड्रिल पता है क्या करना पड़ता है, लाइक शेयर कमेंट, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। साथ ही साथ और इंक्यूबेटर वर्सेस जस्टिस मैच स्टार्ट हो चुका है। लैंड ऑफ डॉन में स्वागत है आप सभी का। ये अल्टीमेट ग्लोरी के लिए खेल रहे हैं, तो पहली गेम देखते हैं कौन लेने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है। एग्जैक्टली है। और अर्ली गेम से ही थोड़ा वो डोमिनेशन आता हुआ दिख रहा है, वो पोक करने का प्रयास जरूर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। टॉप लेन की बात करिए तो जोकर को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको बहुत ज्यादा पोक किया जा रहा है, बार बार उनको जो है अपनी लेन के अंदर फोर्स किया जा रहा है ताकि वो अपनी लेन के अंदर ही खेले, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दूसरी साइड बात करें यहाँ पे खलीद अच्छा खासा विजन देते हुए दिखेंगे। खलीद आपने लिया, आपके पास मोबिलिटी रहने वाला है। लेकिन दूसरी साइड की बात करें टीम जस्टिस, जैसे कि आपने बोला था कि उनका ड्राफ्ट ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा खासा है। यस, उनकी जो विन कंडीशन है वो भी काफी अच्छी तरीके से है, कलिया उनके पास मौजूद है, तो उनको सिर्फ देखा जाए तो सामने 3-3 आपके जो है फ्रंट लेनर रहने वाले हैं, आपको सिर्फ पीछे से जाना है और एक जो डैमेज डीलर है यानी कि जो उनके एमएम है उनको फार्म करवाना है। लेट गेम में हाइपर कैरिक की जो सिचुएशन है वो हमें आती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड देखना पड़ेगा, खलीद की तरफ जाएंगे, बहुत ज्यादा डैमेज, और उसी के साथ यहाँ पे कलिया बार बार बस्ती गई है, लेकिन सुई वो पे भाग चुके हैं, लेवल 3 है, लेकिन जाना चाहते थे अंदर, रोकना चाहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट्री यहाँ पे रोका, उसी के साथ अपने जलबात फर्स्ट फ्लाइट लेके जाएंगे यहाँ पे वैलेंटीना, और डैश करके बचने के प्रयास करना चाहते थे सुयू, लेकिन नाकामयाब। उनका मांगे को शरिंगान इस समय एक्टिवेट नहीं हुआ लगता है, बचते हुए नहीं निकल पाए वैलेंटीना। वो दूसरा किल भी लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ जो खाता है यहाँ पे टीम जस्टिस का वो खुलता हुआ। ओके दैट्स नाइस सेटअप आई विल से। मैंने आपको पहले से बोला था सुयू थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी पिक नहीं दिख रही है मुझे, बाक्शिया या फिर अकाई जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे कोशिश है टॉर्मेंट करने की, ट्रैक करने की, पीछे हटेंगे विद द फ्लिकर राइट नाउ, सोल सेवर का इस्तेमाल, बट बहुत बढ़िया शिफ्टिंग क्लाउड्स उनको खींचा है अंदर, और उसी के साथ मास्टर को फिर से जो है यहाँ पर स्लॉट कर दिया गया है। सो डू यहाँ पे डबल किल देखने को मिल रहा, कूद कूद के जो है इनफर्नल परस्यूट का इस्तेमाल करके ट्रिपल सिक्योर करेंगे। माय गुडनेस यार, फोबियस ने गेम चेंज कर दिया यहाँ पे पूरा, एकदम से गेम चेंज किया। द रीजन इनफर्नल परस्यूट आप जितना ज्यादा मारते रहोगे उतना ज्यादा डैमेज आता रहेगा, उतना ज्यादा जो है एंट्रेंस होती रहेगी, एंड दैट्स द रीजन उन्होंने वहां पे एक ट्रिपल किल सिक्योर किया एकदम से, एक मोमेंट में ही सारी ट्रेड को जो है ऑफ कर दिया अपने तरफ। और नाउ स्कोर वाइज दोनों तरफ सेम है, मास्टर कोशिश कर रहे हैं पहला टटल लेने की, और वो ले भी लेंगे। इफेक्ट ऑफ EXP मैन, दिस इज व्हाई EXP इज द बेस्ट लेन आई ऑलवेज से। मतलब अर्ली फेज में अचानक से गेम पलट दिया बंदे ने भाई। जी एग्जैक्टली, और यहीं पे गलतियां होती है सारी टीमों की, जो थोड़े से अर्ली गेम में अगर आप फाइट जीत जाते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ना लाइक आप फिर जानबूझ के फाइट इनिशिएट करते हो, और वहीं से गलती होनी चालू हो जाती है। आपने अंडर एस्टिमेट किया फोवियस को, और फोवियस ने वहां पे अपनी टीम के लिए ट्रिपल के लिए निकाला, और जो बैलेंस आउट कर दिया यहाँ पे, जो फार्म डिफरेंस क्रिएट होते हुए जा रहा था उसको बराबर करके बोल दिया मेरे दोस्त अभी नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा टॉप लेन की तरफ थोड़ा सा जरूर वो किया जाएगा, कलिया मौके का इंतजार कर रही है कि एक अच्छा सा अल्टीमेट लगाया जाए, लेकिन उससे पहले उनको भी पता है कि अभी आज लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीछे डैमेज इतना नहीं आ पाएगा एमएम का।
कि वो बस्ट डाउन कर सके क्योंकि क्लिंच है। और यहाँ पे देखिए लेन को पूरी तरीके से फ्रीज किया गया था ताकि कि उनको जो है फार्म ना मिले, मिनियन मिस करवाएंगे, लेकिन मिड लेन की तरफ दिक्कत हो सकती है क्योंकि फोबियस चढ़ जाएंगे यहाँ पे। वेलेंसीना आपस से हुए निकलना पर प्रयास फ्लिकर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इविल किलर वहां पे पड़ेगा उनको और उसी के साथ वो धारा शामिल। टॉपलेन की बात करिए तो यहाँ पे बचने का प्रयास करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा डैमेज जरूर सुकअप करेंगे। पीछे से यहाँ पे फोबियस आ चुके हैं और यहाँ पे गलती हो सकती है, बचना पड़ेगा आपको। फ्लिकर का इस्तेमाल, बचे हैं पीछे, अंदर की तरफ जाएंगे 4 बंदे टॉपलेन की तरफ और जस्टिस इस फाइट को पीछे धकेलती हुई और इसी के साथ बैकफुट पे अब उनको आके खेलना पड़ेगा। 3-4 का स्कोर और इंक्यूबेटर इस समय और जमा करती हुई। डेफिनेटली लाइक जस्टिस यहाँ पर जस्टिस देने की कोशिश पूरी करी, लेकिन ऑरा इंक्यूबेटर बहुत ही अच्छा खेल रही है अपनी ओ तरफ से, फिर तो फीनिक्स का इस्तेमाल बट वैलेंटीना की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। उसकी वजह से उनको थोड़ा सा इन्फो यहाँ पर मिला है। देखते हैं इस इन्फो का किस तरह से मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं टीम जस्टिस यहाँ पर। श्रेयास कोशिश कर रहे हैं जोन आउट करने की, प्रॉपर जोन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये देखिए एविल क्विलर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पोकिंग डैमेज देके पीछे हटेंगे विद द ब्लेड सर्ज। टर्टल लेने की पूरी कोशिश, और ये देखिए टर्टल लेने की सिर्फ कोशिश नहीं हो रही है, वहां पे जोन आउट बहुत प्रॉपर्ली हो रही है। सीटीएन ओ का पैसिव हटा है यहाँ पर खलीद यहाँ पर फॉल डाउन हुए हैं और उसी के साथ शिफ्टिंग टावर के साथ आगे बढ़ेंगे। मास्टर को यहाँ पर मैश किया है और डबल किल सिक्योर करेंगे ऑन द जीटीएन। क्या ट्रिपल देखने को मिलेगा? फोबियस अभी भी सस्टेन करते हुए 3 मैन के बीच मेगा किल सिक्योर, अरे डबल किल सिक्योर, क्या 3 डाउन करेंगे? जी जरूर, ट्रिपल किल वाइपर सिक्योर। Maniac is about to come, but at the meantime देख सकते हैं फ्रेडन ने लिया है टर्टल। क्या हमें Maniac देखने को मिल सकता है? कोशिश तो चल रही है भाई। This Phobius is invincible, this Phobius is unstoppable, God like सिक्योर किया Maniac के लिए, टाइम बदला है, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर खदेड़ा है पूरे टीम जस्टिस को यार। अकेले अकेले खेल रहे हैं वो, वन मैन आर्मी है वो। टीम ऑरा इनक्यूबेटर के सच में ऑरा निकालने वाले बंदे हैं वो। इनका ऑरा बहुत हाई है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, फ्लिकर के साथ पीछे हटेंगे। यहाँ पे डेजर्ट टॉर्नेडो का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा बर्स्ट भी पीछे से फॉलो अप आया था जीटीएन की तरफ से, लेकिन वहाँ पे स्लॉट करने में जो है सक्षम नहीं रहे आप बोल सकते। लेकिन ये फोबियस को कौन रोकने वाला है शिंदा भाई? किसी जी के बिल्कुल, हाथ में उतना फोबियस दम हो है? गया। रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। फेडरन ने पूरी तरीके से इग्नोर किया अपनी टीम को, उन्होंने बोला चलिए 3 बंदे हैं, एक बंदा है वो संभाल लेंगे, लेकिन उनको क्या पता था यहाँ पे साउथ की मूवी बनने वाली है, जिस तरीके से वहां पे धोया है 3 बंदों को। और ये फिर दोबारा से सेम गलती यहाँ पे हमें आती हुई दिखी थी कि आपने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा डैमेज जरूर आएगा जोरों के ऊपर। उनके पास अल्टीमेट जरूर रहेगा मेज का। दूसरी साइड की बात करें तो सोरा वहां पे मौजूद रहेंगे, उनके ऊपर दबोचा जाएगा, उनको थंडर क्लॉड यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी के साथ पीछे बचते हुए जाएंगे टॉरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी साइड बात करें तो एमएम के ऊपर थोड़ा प्रेशर अभी दिया जा रहा है, टॉप लेन की तरफ से दिक्कत हो सकती है। क्लिन यहाँ से फिनिश ऑफ करेंगे और उसी के साथ बढ़िया एक और किल यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। और ये बहुत जरूरी है ताकि फोबियस से ज्यादा आपको फोकस इस समय एमएम के ऊपर करना है, क्योंकि फोबियस जो है ना, चलिए आप फार्म हो गए जैसे तैसे चल गए, लेकिन एंड में लेट गेम में आपको गेम जो जिताने वाला वो एमएम ही है। और अगर एमएम गलती से फार्म हो गया तो फोबियस तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि फोबियस यहाँ पे चढ़ चुके हैं और उसी के सुनामी स्लैम आएगा, लेकिन फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। वो डैमेज भरपूर रूप से नहीं रहेगा, सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीछे हटेंगे और मिड का टावर यहाँ पे ताराशाही हो जाएगा, कोई बचने का चांस ही नहीं रहेगा। 4 बंदों के बीच में जरूर रहेंगे। टर्नफॉर्म का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे सोरा की तरफ से, एक सेट लगाते हुए दिखेंगे, किल मिलेगा जरूर उनको। और इस समय आप पीछे हटने का जो है प्रयास करेंगे जरूर, लेकिन मिड लेन वो एक्सपेंशन हो चुका है और उसी के साथ चर्चल के लिए जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि लॉर्ड लेने की पूरी कोशिश रहेगी, और यहाँ पर मेन चीज है कि प्रज्वल भाई को कौन रोकने वाला है, बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ, इनविंसिबल है वो, अनस्टॉपेबल है वो, अनकिलेबल है वो। उनके लिए ये सारे वर्ड्स भी काफी नहीं है भाई। हेवनली डैमेज दे रहे हैं वो, और साथ ही साथ हेवनली वे से जो है वो फिनिश भी कर रहे हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया अभी टॉर्मेंटेशन विद इन्फिनिट परस्यूट, रोकने की पूरी कोशिश, डैमेज आता हुआ पीछे से। कलेया एंगेज करते हुए यहाँ पे सुनामी स्लैम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फॉल डाउन करेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद श्रेयस को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए स्लेन हुए है अल्फा, और साथ ही साथ स्लेन हुए यहाँ पर जोरो। शट डाउन मिला है प्रज्वल को, डबल किल सिक्योर करते हैं क्लिंट। यहाँ पर एट लास्ट मिला है वो किल प्रज्वल जी का, लेकिन टर्टल सिक्योर करके पीछे हटने की कोशिश, राणा यहाँ पे फंस चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया एस्केप यहाँ पे देखने को मिल रहा था। Maniac from the Clint with the flicker, can you just believe?
ट्रिपल लिया था उधर। हमने देखा कि लाइक कोशिश कर रहे मेनियक की, बट भाग रहे थे, बट फ्लिकर के साथ आगे गए, बस्ट किया उधर सीधा और मेनियक सिक्योर किया। भाई ये गेम क्या चल रहा है, मतलब और इनक्यूबेटर के फोबियस वर्सेस हमारे जस्टिस के जोकर के बीच में ही गेम चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अनस्टॉपेबल ओह! प्रयास फंसे हैं फिर से यहाँ पर, और कोशिश यहाँ पर पेपर की कि पहला जो टियर है टॉप का उसको टेक डाउन किया जाए, और कैरी के पास उतना डैमेज अभी है नहीं, तो इट्स अ गुड चॉइस कि आप पीछे रहना पसंद करोगे क्योंकि आपके रोमर अभी डाउन है। प्रज्वल यहाँ पर आगे आते हुए बॉट लेन पर टरेट वन का भी शायद से पतन होने वाला है। जी, बिल्कुल। बात की जाए चीकू ज़रूर अंदर की तरफ वहाँ पे गए थे। इन्हें इवन सुनामी स्लैम भी दिया, लेकिन कलिया के साथ यही इश्यू रहता है कि आपको बर्स्ट चाहिए होता है अपने पीछे तुरंत डैमेज लेने में, ताकि अगर आप किसी को यहाँ पे सीसी दें तो वो हवा में ही खत्म हो जाए। ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, लेकिन दूसरी साइड पे दिक्कत हो सकती है अभी भी। सुयू के ऊपर प्रहार होता हुआ दिखेगा, पीछे से बैकअप आने के लिए कलियत वहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और फाइट जिस तरीके से इनिशिएट हो रही है, वो काफ़ी मैं कहूँगा अच्छी तरीके से हो रही है। फोबियस को भी पता है कि कब अंदर जाना है, कब पीछे आना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फ्लिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लिकर फोर्स करवाया जाएगा यहाँ पे। और बॉटम लेन की बात करें तो वहाँ पे सोरा का अल्टीमेट यानी शिफ्टिंग क्लाउड वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनके पास यूटिलिटी नहीं है। यहाँ पे टीम फाइट गलत साबित हो सकती है कि आपकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे बैकअप करना पड़ेगा। फोबियस के ऊपर प्रहार, और फोबियस यहाँ से बचते हुए निकलना चाहिए किसी भी तरीके से हील अप होते हुए, और यहाँ पे रीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी साइड की बात की जाए तो टीम अच्छे तरीके से पोक कर रही है, और यहाँ पे मेज भी काफ़ी अच्छा एक मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से जो है एक मिनियंस को ना क्लियर आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो यहाँ पे साबित भी होता हुआ दिख रहा है। लॉर्ड के लिए टीम आती हुई दिखेगी, और इस लॉर्ड फाइट पे डिसाइड करेगा कि कौन-सी टीम यहाँ पे विजेता बनती हुई में दिखेगी, क्योंकि इस लॉर्ड के साथ हो सकता है कि यहाँ पे गेम एंड हो सके। सैंडस्टॉर्म आएगा, पकड़ेंगे ज़रूर खालिद, पीछे से अल्टीमेट आएगा मेज का, और ये यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन होता हुआ दिखेगा। फोबिस अंदर की तरफ जाएंगे, मॉन्स्टर किल ले चुके हैं यहाँ पे प्रज्वल। यहाँ पे एक और किल सिक्योर करेंगे, दूसरा किल, ट्रिपल किल के लिए नहीं, बिल्कुल पीछे हटेंगे टीम के लिए। उनको पता है कि ज्यादा अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, और इस समय भैया प्रज्वल अपना जो है और फैलाए बैठे हैं। बात करें स्कोर की तो 14-14 का स्कोर है, लेकिन लॉर्ड्स वो जा चुका है टीम और इंक्यूबेटर की तरफ से, और वहां से अब जो है लेन पुश होगा आपका, और यहाँ से आपके पास एक मौका मिल जाएगा आपको अच्छा खासा जो मैप का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का। भाई बाई चांस सेलेस्टियल टाइटंस या फिर यहाँ पर टीम नोवा स्पोर्ट्स आती है और वो अपना फ्रेया अल्टीमेट फ्रेया पिक लेती है ना भाई, प्रज्वल भाई तो पूरा खुश हो जाते हैं एकदम से। अच्छा हुआ कि वो ऑब्वियस बात है भाई, जैसे वो फोबियस खेल रहे उनके सामने फ्रेया लैंसलॉट आ गया तो फिर उनकी बल्ले बल्ले, और हैरिथ आ गई तो फिर भाई वो सच में बोलता हूँ वो पूरा मतलब वो मैच को ही जिता देंगे, बट यहाँ पर जेडियन को पनिश करेंगे इजीली। आगे बढ़ते हुए डेजर्ट टॉर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फोबियस बहुत ही कम हेल्थ में है। क्या सोरा यहाँ पर एंगेज करने की कोशिश करेंगे? 3v1 सिचुएशन, खलीद विल बी टेकन डाउन हियर बाय जोरो। फाइनल ब्लो आ चुका है और यहाँ पे रिट्रीट करते हुए प्रज्वल एंड उनके टीममेट्स नहीं, सिर्फ टीममेट ही है यहाँ पर। माशर स्मैशर ही बचे हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। एक कोशिश है कि लाइक इस मैच को जीती जाए। ऑब्जेक्टिव वाइज अभी टीम और इंक्यूबेटर बहुत ही अच्छे स्थान पे, और अगर हम मैक्रो वाइज की बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में भी वो आगे है क्योंकि मिड की पहली स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ दी है, और अभी उनके ऊपर वो प्रेशर वो टियर 1 लेने की कोशिश आगे बढ़ते हुए एंगेज करने की, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर लेके जो है वो करके पीछे आएंगे, और पीछे से देखिए डैमेज देते हुए यहाँ पर जेटियन। जी अच्छा बिल्कुल। सेटअप तो बन रहा है, लेकिन शिना भाई मेन कड़ी जो है रोम वाली, वो थोड़ा-सा यहाँ पे बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब श्रेयास उतना ज़्यादा फ़ॉलो अप नहीं दे पा रहे, उतना ज़्यादा सेट नहीं दे पा रहे। अगर वो उनकी तरफ से उतना ज़्यादा सेट दे पाएँगे और उनको उतना ज़्यादा फ़ॉलो अप मिल पाएगा सटीक टाइम में, तो फिर मुझे लग रहा है कि ऑरा इनक्यूबेटर को हराना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब बैकलाइन कुछ कर ही नहीं पाएगा। देयर इज़ अ फोबियस एंड शी इज़ प्लेइंग सो गुड, बट यहाँ पर फ्लिकर के साथ आगे बढ़ेंगे और फ्लिकर के साथ पीछे भी हटेंगे वैलेंटीना। दैट्स अ ब्यूटीफुल एस्केप कमिंग वो आउट हियर। उनको पकड़ा है यहाँ पर सुनामी स्लैम की मदद वो से, पीछे से फिर द फिनिश का इस्तेमाल, प्रज्वल आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहला स्लेन कर दिया है। जोरो गॉट डाउन एज वेल, टू मैन गॉट इनटू द हैंड। Phobius अंदर जाते हुए precious raid, but he gonna shut down Joker here. Double kill secured and he will वो fall down पूरा immediately by the Titans. Damage with the tear damage getting combined there. But look at it. सोरा आगे बढ़ते हुए शिफ्टिंग क्लाउड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनको मिलेगा नहीं कोई किल। पीछे हटेंगे पूरा निराशा से। जी बिल्कुल। जिस तरीके की पारियां आती हुई दिखी, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया जिसके कारण
वहाँ पे जो गेम था वो थोड़ा-सा अब पलट चुका है और इंक्यूबेटर उनकी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। अब बात की जाए यहाँ पे देखिए हाइपर की भी, स्मैशर की भी बात की जाए, सुयु इतना अच्छा खासा कुछ चला ही नहीं। अगर सुयु के अलावा यहाँ पे कोई यूटिलिटी जंगलर होता, गुनीवर होता है या तो फिर आपका बादशाह वगैरह होता ना, तो ये स्कोर बोर्ड और अलग हो जाता है यहाँ पे। तो मतलब ये जो लैकिंग कर रही है थोड़ी-सी चीज़ें, वो यहाँ पे दिख रही है और ये थोड़े-से जो है ना पिक की तरफ से दर्शाता है, जिसके कारण एक मौका यहाँ पे टीम जस्टिस को मिला था यहाँ से। अब एक और मौका यहाँ पे उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये आखिरी मौका रहने वाला है। अगर यहाँ से इन्विटेटर रेट टूट गए आपके, तो वहाँ से कमबैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और यहाँ पे कहीं न कहीं वो कमज़ोर कड़ी यानी कि ज़ोरो के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। बैकलेन की तरफ से जो है स्क्विशी हीरोज़ को पकड़ने का प्रयास कर रही है टीम और यहीं पे जो है पकड़ना पड़ेगा आपको बहुत ही संभल के, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा सुनामी स्लैम आएगा पीछे से, जाएँगे ज़रूर बैकअप आता हुआ टीम का और बहुत ही कम एचपी बचते हुए निकलेंगे। सिस्टिंग क्लाउड आएगा ज़रूर, 3 बंदों के बीच में शटडाउन दिया गया, 3 बंदों को ज़ोन आउट करने का प्रयास, लेकिन बीच में यहाँ पे जुड़े रहेंगे प्रज्वल, उनसे बच के कैसे जाएँगे? ये प्र लेके आते हैं अपने साथ और ये देखिए तहस-नहस पूरी टीम को यहाँ पे वाइप आउट कर दिया जाएगा। 4 बंदे धाराशायी, 5वें बंदे के लिए वहाँ पे बचते हुए निकलना पड़ेगा। चीपू यहाँ पे फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए निकलेंगे और उसी के साथ 4 बंदे उनकी टीम के यहाँ पे धाराशायी हो चुके हैं। लॉर्ड के लिए ओपनिंग यहाँ पे ईज़ी खुली छोड़ दी गई है और उसी के साथ-साथ ये ब्लू बफ लेते हुए जाएँगे लॉर्ड्स की तरफ। तो लॉ पता नहीं लॉर्ड क्यों नहीं ले रहे वो। ब्लू बफ लेने के बाद लॉर्ड लेना चाहिए था उन्हें, बट अभी वो थोड़ा सा मीनियन क्लियर कर रहे हैं, मेनली बिकॉज कैरी डाउन है, शायद वो रीजन है। बट सुयो अकेला लॉर्ड ले सकता है अगर आप देखा जाए तो। ये टाइम वेस्ट किया है, मैक्रो मिल सकता था इजीली उनको, बट कोई बात नहीं। मिड का टियर 2 यहाँ पर सिक्योर करती हुई टीम और इनक्यूबेटर लॉर्ड के लिए जाने वाली है अभी। देखिए लॉर्ड स्टार्ट हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है आप देख सकते हैं कि बैक हो चुके हैं वो लैंड डाउन में, रीसेलेक्ट हो चुके हैं। तो एक तरीके से हो सकता है कि कंटेस्ट करने जाए, और ये देखिए कंटेस्ट करने में रुचि रखते हुए टीम जस्टिस यहाँ वो पर फाइट एंगेज होती हुई और रिट्रिब्यूशन के साथ क्लच किल करेंगे इस लॉट को। एक छोटी गलती, एक छोटा फैसला जो भारी पड़ेगा टीम और इंक्यूबेटर को। और ये देखिए एंगेज हुआ है, फिर फिनिक्स आता हुआ यहाँ पर वैलेंटीना की तरफ से, और साथ ही साथ ये देखिए शिफ्टिंग क्लाउड्स, क्लाउडिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सोरा क्या बच के निकल पाएंगे? जी जरूर। बहुत ही कम एचपी में यहाँ पे फोबियस को टॉर्मेंट करते हुए स्लेन कर दिया जाएगा प्रज्वल को, और साथ ही साथ डबल किल सिक्योर करेंगे स्मैशर के ऊपर, जोकर यहाँ पर फायर करते हुए। क्या ट्रिपल किल सिक्योर कर पाएंगे लॉर्ड? यहाँ पे ओह! आगे बढ़ते हुए स्लेन हुए हैं यहाँ पर जेटियर। वो छोटी गलती, वो छोटा फैसला जो सुयू ने किया ब्लू बफ और मीनियन क्लियर्स करने का, या वो भारी पड़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मिड टियर 2 यहाँ पर फंसता हुआ सोरा आगे बढ़े हैं टर्रेट का डैमेज खाते हुए, लॉर्ड आगे बढ़ते हुए, मीनियन की वो वेव्स आती हुई, कैरी को यहाँ पर टॉर्मेंट करते हुए टीम जस्टिस के जोकर। इट माइट बी द एंड, एंड इट विल बी द एंड गाइस। वो छोटी गलती, वो छोटा फैसला बहुत भारी पड़ा है और इंक्यूबेटर को। दे कुड हैव डन द लॉर्ड एट दैट टाइम। stu you could have gone for that lord at that time। उन्होंने ब्लू बफ और मीनियन के चक्कर में मैच गवा दिया भाई अपने हाथ से। और यही दिक्कत होता है एसटीजी, जब आप एक मैच अच्छी तरीके से जीत रहे हो, सिर्फ एक गलती यहाँ पे आपने कर दी और अपोनेंट ने उसका फ़ायदा उठा लिया, जिसके कारण वो वहाँ पे वो लॉर्ड मिला उनको, वो लॉर्ड सिक्योर किया, फेडरर ने अंदर जाते हुए वो गए अंदर, उनको पता था अपने रेटरी के ऊपर कि रेटरी तो भैया मैं मार दूँगा, मिस नहीं करूँगा और उन्होंने किया। उसके बावजूद गेम बचाया जा सकता था, अगर टीम पीछे आके खेलती, ना कि ओवर एंगेज करती और वही ओवर एंगेज के चक्कर में आप एक के बाद एक फिनिश ऑफ हुए और जिसके कारण बेस बचाने के लिए कोई बचा नहीं और उस वहीं पे जो गेम है उसकी समाप्ति हो गई। डेफिनेटली लाइक मैं एक बात बोलूंगा कि थोड़ा सा माइक्रो वाइज गलत डिसीजन लिया है यहाँ पर सुयू ने, कि जब टीम वाइप आउट हो जाती है, सामने वाली टीम का सिर्फ रोमर है, आपको तुरंत लौट जाना चाहिए। यू शुडंट हैव वेंट टू दैट बफ, ब्लू बफ या फिर मीनियन क्लियर करने के लिए। आई नो कि मीनियन क्लियर करना जरूरी होता है, आपको टियर 2 मिला, बट देखिए आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई रिट्री बैटल में जीतने वाला हूँ। फेडन आते हैं तुरंत क्लच स्टील कर दे लॉर्ड को, वहां पे आप 50-50 स्माइट भी नहीं दे पाए उधर, एंड तुरंत जो है लॉर्ड आपके ऊपर हो गया। यहाँ पे दुख तो मुझे एक इंसान के लिए लग रहा है, वो है प्रज्वल, बिकॉज ही ट्राइड हिज बेस्ट एट लास्ट तक, बट व्हाट कैन वी से। जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, टीम जस्टिस यहाँ पर जीतती हुई पहले मोबा वार्म अप स्किम क्लास को। बट इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं और एश टीजी शिंड्रा वापस आएंगे फॉर द गेम नंबर 2। कहीं मत जाइए गाइस, 6:30 में स्टार्ट होने वाला है। जी, बिल्कुल।
कुछ ही देर में मिलेंगे दोस्तों, और उसी के साथ आज एक नाम याद रहेगा। स्क्रीम्स में आज एक बंदा जो अपना नाम जरूर बना के जाएंगे, वो रहेंगे हमारे प्रज्वल भाई। तो उनके लिए एक जोरदार तालियां। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है देवियों सज्जनों आप सभी को मोबा वार्म अप क्लास सीरीज अल्गैमो esports की तरफ से प्रोड्यूस किया गया। इसमें होता है क्या कि गाइस जो नई टीम से उनको चांस मिलती है खुद को प्रूव करने का और उनको एक चांस मिलता है जो है हर हफ्ते खुद को ट्रेन करने का फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ अल्गैमो esports एज वेल एज मोबा सीन मतलब ये कॉम्पिटिटिवली एक बोल सकते हैं आप हमारे कम्युनिटी को जो अंडरडॉग्स है उनको अच्छे से ट्रेन करने की और उनको आगे बढ़ाने की एक प्रतिक्रिया है। बाकी वेलोसिटी बनाम टीम मैवरिक वेलोसिटी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम काइंड ऑफ अ डोमिनेबल स्क्वाड राइट नाउ। उन्होंने अभी तक ये जो आफ्टर बैटल फॉर क्राउन जितने सारे वार्म अप क्लास सीरीज हुए हैं जितने दिन का भी हुआ है उसमें इन्होंने इतना अच्छा खेल दिखाया है कि आई कांट इवन से एनीथिंग एल्स टू देम। दे हैव प्लेड सो गुड टिल नाउ। तो उन्होंने डोमिनेट किया है हर एक गेम को तो आशा है कि आज भी कुछ वैसा ही रहेगा उनका। बाकी इस तरफ से मैवरिक्स ये एक थोड़े से नए टीम है मेरे लिए। चिन्ना भाई आप किए हो कास्ट इनके लिए? जी, बिल्कुल। और मैचेस जैसे होंगे, वो जैसे अभी पिछला मैचेस गया भाई, कितना बढ़िया वहाँ पे मैच जा रहा था, लेकिन एंड में एक गलती और वहाँ से फिर जो गेम है पूरा पलट गया। तो ऐसे ही रहता है मोवा पे, क्योंकि मोवा पे देखिए जनरली गेम क्या रहती है इसी में कि लूजिंग टीम को भी एक चांस मिलता है। अगर उस चांस पे अगर आपने अपना हाथ मार लिया, तो वहाँ से गेम जो है आप पलट सकते हो। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गेम किस तरीके से पलटा जाएगा, क्योंकि बैन्स की बात करें यहाँ पे हमें फोबियस बैन आता हुआ फोबियस कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। फोबियस भी बैन है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे पकीतो। पकीतो बैन होते हुए गए यहाँ पे। और पकीतो की बात करें तो अभी मेटा पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा पिक रेट इस हीरो का बढ़ चुका है और जो बफ इनको मिला है अच्छे तरीके से मैच में मैं खेल रहा था भाई, एकदम अनक्लेमेबल भाई। अगर आप सस्टेन वाला बना लो ना बिल्ड, उसके बाद तो आप मर ही नहीं सकते हो भाई। इतनी जल्दी-जल्दी आपका सीडी रिडक्शन आता है, 40% का सीडी रिडक्शन वाला बिल्ड पे बहुत क्रेज़ी चलता है भाई पकीतो। और असैसिन बिल्ड में भी वन शॉट क्रेज़ी। और जी यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिक की बात करी जाए, टीम वेलोसिटी की तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे हमें जूशिन। जूशिन ओपन छोड़ दिया है यहाँ पे, तो दिक्कत अब बहुत ज़्यादा होने वाली है फ्रंट लेनर्स को। जी, ज़रूर। और साथ ही साथ कुछ काउंटर भी नहीं लिया। मुझे लग रहा था कि लूइस या फिर किमी जैसा कुछ पिक्स देखने को मिलेगा टीम मैवरिक्स की तरफ से। कि नो मैवरिक्स गोना गो फॉर दैट ईव। इस तरफ से क्रॉक और क्लॉड मैं आपको बोलता हूँ ना वेलोसिटी का इंटेंट अलग रहता है भाई। वो स्क्रिम को स्क्रिम की तरह नहीं लेते हैं। वो स्क्रिम को टूर्नामेंट के मैच की तरह लेते हैं भाई। उनकी पिक्स आप देखोगे दे डोंट ट्राई आउट एनीथिंग। दे गो फॉर देयर आई मीन अल्टीमेट पिक्स। एंड दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। लाइक लोग बोलते हैं कि स्क्रिम को स्क्रिम की तरह लो, ट्राई आउट करो कुछ चीजें, एक्सपेरिमेंट करो बट यू नो एक ईगो होता है जीतने का कि मुझे हारना नहीं है भाई। तो ट्राई आउट करने में वो गैम्बल हो सकता है, हार सकते हो, जीत सकते हो बट आप जब अपना कंफर्ट में रहते हो, आप जब अपना अल्टीमेट पिक्स लेते हो, तो ऑब्वियसली यू नो कि यू गोना विन द गेम सो फार। सो दैट्स द रीजन राइट नाउ वेलोसिटी जो है अपना बेस्ट गेम देती है हर गेम में एंड दैट्स द रीजन दे वेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पिक्स या उस तरफ से यहाँ पे एटलास आती हुई देखने को मिली थी। आप पूछ रहे थे एटलास को बैन करने का क्यों दरकार था उधर, लेकिन अभी वो आपको पता चल जाएगा कि ये गेम पे वो एटलास कैसा फंक्शन करता है, कैसा दिखाता है अपना गेम, उससे पता चल जाएगा। और एटलास ले रहे थे तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं लिलिया या फिर लुई थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है रादर देन गोइंग फॉर दिस ईव। बट कोई बात नहीं, अगर यू नो लाइक एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहा तो फिर मैच जीत सकती है टीम मैवरिक यहाँ पर। उनकी ड्राफ्ट मुझे अच्छी लग रही है। लाइक दोनों की ड्राफ्ट अभी तक तो सही लग रही है। अब जंगल अभी तक दोनों टीम ने नहीं लिया है। इस तरफ से अभी तक गोलियन पिक नहीं आया है मैवरिक की तरफ से। तो एक तरीके से वो देखना है कि गोलियन पे वो क्या लेने वाले हैं अगेंस्ट दिस क्लॉड हैरिस बैन किया है खुद से तरफ से। यहाँ पे देखिए जंगल इनिशियली बैन कर दिया जा रहा है, कैरी को भी बैन कर दिया गया। प्लॉट के अगेंस्ट अभी फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि बीट्रिक्स एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट अदर देन बीट्रिक्स we have seen yesterday Kelra playing that Brody against that plot. The only match Onik won, that was the Kelra's Brody वाला game, जिसमें सबने बोला, कास्टर्स ने भी बोला कि लाइक इट माइट बी अ गैम्बल, इट माइट बी वो स्काई पे से लेना वो गलत हो सकता है। तो क्या ब्रॉडी आएगा? नहीं, ग्रेंजर के साथ उतरेंगे मैवरिक। जी, बिल्कुल, ग्रेंजर देखा जाए मैटअप की बात की जाए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ, कि अगर आप अपना स्टैक मेंटेन कर लेते हो, पीछे रह लेते हो, तो एज़ अ पोक तो उसके तौर पे चल जाते हैं अच्छा खासा या फिनिश ऑफ करने के उस पे चल जाते हैं। लेकिन एक डैमेज सोर्स प्योर रूप से वहाँ पे बनते हुए हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन दूसरी साइड की अगर बात की जाए, यहाँ पे गुनिवर आती हुई दिखी, उसके साथ-साथ एलिस ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा टीम
वेलोसिटी की तरफ से ना ये बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा खासा ड्राफ्ट है। इसमें आप नोटिस करेंगे डैमेज भी है, बर्स्ट भी है, कंटीन्यूअस डैमेज भी है। उसके साथ-साथ सीसी सेट लगाने के लिए आपके पास इतने सारे हीरोज़ हैं, जहाँ पे आप एक बढ़िया तरीके से जो सेट है वो लगा सकते हैं। दूसरी साइड की बात करें यहाँ पे अल्फा उठाया गया है, तो अल्फा आई मीन अल्फा देखिए यहाँ पे इसलिए उठाया गया ना क्योंकि थोड़े अंदर जाके हीरो खेलने वाले तो वहाँ पे उनका एक ये रह सकता है पॉइंट कि आप अंदर वहाँ पे अल्टीमेट लगाते हुए अपना जो ट्रू डैमेज है उसके थ्रू जा सकते हैं। बट इवन दो कि आप अल्फा चले जाएँगे, आई डोंट थिंक कि आपको इतने अच्छे खासे मौके यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सीसी रहने वाला है कि आप खेल नहीं पाओगे। एक बार भी आप अंदर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे एलिस का अल्टीमेट रहेगा, उसके साथ-साथ टेक्टोनिक चार्ज, उसके साथ-साथ फिर वहाँ पे गुइनिवेर का और फिर यहाँ पे अपनी जो मेज है यानी कि जूशिन उनका तो यहाँ पे कंटीन्यूअसली डैमेज आने ही वाला है। ओवरऑल बात की जाए टीम मैवरिक की तो यहाँ पे थोड़ा-सा उनका जो ड्राफ्ट है ना लग रहा है कि थोड़ा-सा कम्फर्ट पिक की साइड भी है। उसके साथ-साथ ओवरऑल ड्राफ्ट मेरे को दोनों ही टीम का बढ़िया लेकिन मैं यहाँ पे वेलोसिटी के साथ जाना चाहता हूँ। उनका ड्राफ्ट मेरे को ज़्यादा क्लीन लगा है। अगर यहाँ पे जंगलर के तौर पे कोई दूसरा जंगलर आता तो मेबी शायद वहाँ पे स्थिति थोड़ी अलग बन सकती। मेबी एक्सबॉग अगर ट्रू डैमेज के साथ जाना ही था, आपके पास एक अच्छा खासा मौका मिल जाता एक्सबॉग के साथ। आप इमॉर्टैलिटी डाल के आराम से बच के निकल सकते थे और इंसैनिटी के थ्रू वो अच्छा खासा डैमेज जो आपका मिलता ट्रू डैमेज वो भी बढ़िया तरीके से रहता। लेट्स सी कि किस तरीके की जो यहाँ पे जो गेम्स है वो हमें आते हुए दिखेगी और देवियों सज्जनों स्वागत है आपका। आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे लैंड ऑफ डॉन में और ये शुरुआत यहाँ पे होती हुई जाएगी टीम वेलोसिटी वर्सेस टीम मैवरिक और ये पहला मैच यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है। दूसरा मैच चल रहा है, पहला मैच तो फिनिश ऑफ हो चुका था यहाँ पे और चलिए यहाँ पे देखते हैं इस मैच का विजेता कौन बनता हुआ जाएगा। नहीं, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है टीम मैवरिक यहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी, लेकिन वेलोसिटी का जो मतलब पिछला रिकॉर्ड्स अगर आप देखोगे, तो फिर उनकी गेम बहुत अच्छी गई है। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं यहाँ पर टीम मैवरिक्स के अगेंस्ट वेलोसिटी की एग्जीक्यूशन कैसे रहने वाली है इस ग्वीनी जंगल के साथ और उस तरफ से अल्फा जंगल। तो वो भी थोड़ा-सा लाइक ऑफ मेटा पिक है और ये देखिए यहाँ पर हिंडर्स देते हुए लैंटर्न प्लेयर से एटलास को पीछे हटेंगे। एटलास यहाँ पर सी क्रीचर का इस्तेमाल कर और उसी के साथ-साथ लाइक गेम जितना ज़्यादा डीप जाता रहेगा, उतना ज़्यादा क्लॉड का डैमेज आता रहेगा। आपने क्लॉड के लिए परफेक्ट काउंटर तो नहीं लिया है, सिचुएशनल वाइज़ आपने काउंटर लिया है, दैट इज़ द ग्रेंजर। और फिलहाल के लिए अगर ग्रेंजर सही से काम नहीं दिया ना, लाइक अर्ली स्नोबॉल नहीं मिला ना उन्हें, तो फिर वो लेट पे दिक्कत होने वाला है आपकी टीम को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एंड दैट्स व्हाई लाइक ये चीज़ें सिर्फ मैवरिक को ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी, बल्कि वेलोसिटी भी जानती है कि अगर हम ग्रेंजर को स्टार्टिंग में ही डाउन करने के लिए सक्षम रहते हैं, तो फिर लेट गेम पे हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए टीम मैवरिक्स यहाँ पर रेडी होती हुई और टॉप लेन पे आप देख सकते हैं मास को कितना ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है वहाँ पर और उसके कारण मास पीछे हट रहे हैं और यहाँ पे मिड लेन पर थोड़ा-सा पोक आता हुआ देखने को मिला। पहला टर्टल अभी तक पहली ब्लड नहीं मिली है लेकिन पहला टर्टल शिंदा भाई एनी गेस? जी, बिल्कुल पहला टचल लेट्स सी कि यहाँ पे पहले जो है ज़ोन आउट किस तरीके से होता हुआ दिखेगा। ये ज़ोन आउट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्योंकि पीछे से आके ज़रूर यहाँ पे बात की जाए जंगलर की तो दोनों ही जंगलर के पास डैश यहाँ पे मौजूद रहने वाला है लेकिन यहाँ पे ड्रैगन वो आते हुए दिखेंगे अल्टीमेट फॉर्म में और उसी के साथ पीछे की तरफ से गए हैं बढ़िया अल्टीमेट लगाया है टाइटल लॉक इन कर दिया है लेकिन उसी के साथ आपने टाइटल तो लॉक इन कर लिया फर्स्ट ब्लड भी यहाँ पे मिल चुका है। चलिए एक नेले पे दहला यहाँ पे स्थिति हो चुकी है और उनको अब बच के निकलना पड़ेगा। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया है ईव की तरफ से और यहाँ पे एक चटल के साथ एक किल भी मिल चुका है। तो टीम मैवरिक ने अपना जो खाता है वो खोल लिया है और बात कर रहे थे कि जिस तरीके से वो आएँगे ज़रूर अंदर की तरफ। ड्रैगन की तरफ से मैं कहूँगा बहुत अच्छा उनका एक जो एडवांटेज रहता है अपना अल्टीमेट फॉर्म में आते हुए सीधा अंदर की तरफ गए और हाइब्रिड फॉर्म में वहाँ पे पूरी पूरी तरीके से वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज़ किया, वो बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये अच्छी एक्सपी की पहचान होती है कि उनको पता है कि कब इन जाना है और कब आउट आना है। देखते हैं कब इन कब आउट वो तो देखने लायक होगा यहाँ पर मैवरिक्स की तरफ से बट हीरेज आई मीन जीरेजी ये ग्रेंजर बहुत अच्छा खेलते हैं। हमने देखा है उनका ग्रेंजर गेम प्ले पिछले दौर पे और मार्स और ये वर्सेस ओह! हाउड यहाँ पर होता हुआ लेकिन मार्स पीछे हटेंगे विदाउट एनी ट्रेड। ये एक चीज है लाइक आप जब यूरेनस या फिर एलिस के साथ खेलते हो अगेंस्ट यूजोंग तो डेफिनेटली आप मतलब काइंड ऑफ लेन टू लेन मैचअप में काउंटर देते हो गैप देते हो यूजोंग को। दैट्स द रीजन लाइक यूजोंग को इतना ज्यादा स्नोबॉल नहीं मिलता बट यहाँ पर ग्विनी कूदे है स्पेशल माइग्रेशन वैलेटम कॉम्बो के साथ उनको थोड़ा सा एंट्रेंस ओह! देखने को मिल रहा है। स्पीयर ऑफ अल्फा आगे बढ़ते हुए अल्फा यहाँ पे एंगेज करेंगे सिक्योर करेंगे किल पीछे से आरडब्ल्यूएम स्लो डाउन करती हुई डबल किल मिल सकता है जूशिन या टेकन डाउन विद दैट सोनाटा
जस्ट गेटिंग इनटू द मैच। जीरेजी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया है। कॉन्सोलेशन किल फॉर वेलोसिटी। अच्छी स्टार्ट तो हुई नहीं है वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। स्पीयर ऑफ अल्फा, और उसी के साथ ये देखिए एक इजी स्विफ्ट के साथ यहाँ पर स्मैश किया है फॉर द फोर्थ ट्रेड। जी, बिल्कुल नोटिस करेंगे यहाँ पे क्लॉड ने अच्छी तरीके से पीछे की तरफ गए थे, मेज का किल निकाला और उसके बाद जो है वहाँ पे दिक्कतें साबित हुई। मेज का नहीं आई थिंक यहाँ पे एमएम का किल निकाला था। मेज को चेज़ कर रहे थे लेकिन दूसरी साइड पे अल्फा उनको फ्री हैंड मिल गया और अल्फा इस समय फार्म हो चुके हैं। अब यही स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आपको स्नोबॉल में आपको अर्ली गेम में स्नोबॉल मिल जाता है अल्फा से, तो फिर आप ऑलमोस्ट अनकिलेबल हो जाते हो। आपको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपका हील और आपका जो डैमेज है वो ट्रू डैमेज इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है कि बच के निकल पाना फिर आपकी उधर से वहाँ मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा। टीम फाइट की बात की जाए, अभी तक जो टीम फाइट है जो है 5 वर्सेस 5 अभी तक हुआ नहीं है। उससे पहले बात की जाए यहाँ पे मैक्रो की, तो मैक्रो के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से रोटेशन आते हुए हमें दिख रहा है। आप नोटिस करेंगे कोई भी ऐसा हमने अभी तक कोई ऐसा ऑकवर्ड अल्टीमेट या फिर कोई ऑकवर्ड ऐसा स्किल यूज़ और होते हुए नहीं देखा है, यूटिलिटी ऐसा यूज़ होते हुए नहीं देखा है। बहुत ही कैलकुलेटेड वे में दोनों ही टीम बढ़िया तरीके से खेल रही है। बात करें स्कोर की तो 1-4 का स्कोर यहाँ पे जा रहा है और फार्म डिफरेंस की बात करें तो टीम मैवरिक उन्होंने थोड़ी-सी पकड़ यहाँ पे अपनी बना लिया और उसको मेंटेन करते हुए उनको चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो वेलोसिटी इज डूइंग ग्रेट बाय, क्योंकि मतलब एक 4 में जब ट्रेड पलटा तो वेलोसिटी अभी पेस ऑफ करके खेल रही है, इतना ज्यादा एंगेज नहीं कर रही है, लेकिन एंगेज करने में यहाँ पर जो है उनको फोर्स आउट करेगी मैवरिक्स। फेटल लिंक्स के साथ आगे बढ़ते हुए पीछे से आरडब्ल्यूएम का ओ इस्तेमाल, लेकिन शट डाउन होंगे यहाँ पर ओमी मानू। जीरेजी विद द रैप्सोडी पीछे से अटैक करते हुए ओह! डेथसोनाटा का इस्तेमाल, काजिन फॉल्स डाउन, सो डू शारजी। आप एक तरीके से आप सार्जेक्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लाइक दोनों तरफ से वो ट्रेड ऑफ होने को मिला है हमें देखने को 2 फॉर 2 का। बट व्हाट अ प्ले कमिंग आउट फ्रॉम मैवरिक एट दिस पॉइंट। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले। जी, बिल्कुल, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में खेल रही है। हेडलेस की बात करें वो स्लो डाउन उनका जो पैसिव है बेसिकली आर्टिक कोल्ड वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साबित हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा क्लॉड प्रहार करते हुए जाएँगे ज़रूर। पोक डाउन किया ग्रेंजर को और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज क्लॉड का दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा। यूज़ोंग मौजूदा है, पैसिव मार्क लगाते हुए जा ज़रूर रहे हैं। गुनिवर की तरफ से स्पेशल माइग्रेशन आया ज़रूर था लेकिन वो वॉल के थ्रू कैंसल हो गया और यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक यूनिवर की तरफ से। आपके पास एक अच्छा खासा मौका था यहाँ पे ड्रैगन को लेने का, लेकिन आपने वो मौका गँवा दिया जिसके कारण अभी टर्टल भी आपके हाथ से जाता हुआ जाएगा। टर्टल जो मोस्टली आपका था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फॉल्ट आपको अभी वहां से जो है इग्नोर करना पड़ेगा दिस टर्टल को। धीरे धीरे न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स जो है हाथ से निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, मैच अभी तक जो है इतना दूर नहीं गया है, क्योंकि गोल्ड लीड अगर आप देखोगे इतना ज्यादा है नहीं, तो वेलोसिटी कमबैक कर सकती है यहाँ पर। और यस। अभी तक जितना हमने देखा है मैचेस, वेलोसिटी हैज बीन डूइंग सो ग्रेट। वो चाहे विंटर घोस्ट हो या फिर विंटर शैडो हो, दोनों ने जो है कमाल का गेम प्ले दिखाया है थ्रू आउट द वीकली स्क्रीम डेज। बट अगर आज हिस्ट्री चेंज हो सकती है वीकली स्क्रीम की, मैवरिक्स यहाँ पर अगर कुछ अलग करके दिखाती है, तो फिर भाई देखने लायक होगा वो चीज। टॉप लेन पे अभी तक इतना ज्यादा कुछ ट्रेड ऑफ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि रोटेशन वाइज अगर आप देखोगे तो गोल्ड लेन पे ज्यादा रोटेशन दिया गया है और गोल्ड लेन पे ही ज्यादा फाइट हुई है। इसमें जी रेजी एज वेल एज जो बेबीलोन है, दोनों ने फायदा उठाया है उसका। और आप देख सकते हैं दोनों के पास काइंड ऑफ इक्वल गोल्ड है, इक्वल केडीए भी है। जस्ट कि रीजी एक बार फॉल हुए हैं, बाकी बेबीलोन अभी तक सेफ खेल रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस, वो भी इतना देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ना रीजी की तरफ से एक स्ट्रक्चर गिरा है, ना बेबीलोन की तरफ से एक स्ट्रक्चर गिरा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा मैक्रो वाइज गेम तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम टीम ओरिएंटेड गेम देखने को मिल रहा है। लाइक सोलो किल आपको देखने को नहीं मिलेगा, टीम ओरिएंटेड गेम लाइक प्रॉपरली चेंड अप करके अटैक करते हुए देखने को मिल रहा है। उस तरफ से रीजी यहाँ पे आते हुए डेथ सोनाटा का इस्तेमाल करते करेंगे और पीछे हटेंगे बिना कोई कैजुअलिटी के। अच्छी बात है, टर्टल से पहले थोड़ा सा जो है पोक डैमेज करते हुए यहाँ पर 1v1 सिचुएशन एट ओ लास्ट अंदर जाते हुए डज हैव द ब्लड ऑट, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटलिंग्स का इस्तेमाल किया है अंदर लेते हुए आरडब्ल्यूएम पीछे से मिस्टर माइग्रेशन यहाँ पर स्पीयर ऑफ अल्फा होता हुआ स्लेन किया है मार्क को। और साथ ही साथ पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही कम एचपी में जो है यहाँ पर कूट को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। 1 फॉर 1 EXP फॉर EXP। ट्रेड सीम हुआ है लेकिन टर्टल चला गया है, लॉर्ड आ गया है भाई।
तो लॉर्ड की बारी, देखते हैं लॉर्ड को कौन लेता है, मैवरिक या फिर टीम वेलोसिटी। यहाँ पे क्लॉड एंगेज करते हुए बहुत ज्यादा डैमेज उनकी तरफ से आता हुआ, लेकिन एट लास्ट वो सी क्रिएचर का इस्तेमाल करके पीछे हटेंगे। साथ साथ अल्फा यहाँ पे रेडी है स्पीयर ऑफ अल्फा के साथ। वो स्विंग, ओह! वो स्विंग बहुत ज्यादा ट्रू डैमेज देती है, एंड दैट्स द रीजन बर्स्ट डाउन कर रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल, वहाँ पे फ्लिकर का इस्तेमाल किया। मेज ने बहुत बढ़िया तरीके से गुनिवर का जो स्पेशल माइग्रेशन है, उसको डॉज किया। हालाँकि उनका फ्लिकर यहाँ पे यूज़ हो गया, लेकिन वो बहुत बढ़िया तरीके से था ना, जैसे जज किया उन्होंने, सोचा प्रेडिक्शन लगाई कि यहाँ पे जंप कर सकते हैं और तुरंत यहाँ पे गए, लेकिन यहाँ पे ग्रॉग अकेले फँसेंगे, 4 बंदों के बीच में डैमेज आएगा और इसी के साथ यहाँ पे आरडब्ल्यूएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मेज को भी चेतना पड़ेगा, टच कच यहाँ पे जो है ड्रैगन वो मौजूदा रहेंगे, उसी के साथ स्पेशल माइग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। कोशिश रहेगी डैमेज देते हुए जाएँगे, बहुत ज़्यादा डैमेज। एलिस का अल्टीमेट सस्टेन करना चाहती है 4 बंदों के बीच में, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उनको मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। मिड का टर्रेट बचाने के लिए वो कोशिश यहाँ पे उनकी तरफ से होती हुई जाएगी, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिलेगी और यहाँ पे एक और टर्रेट जो है उनकी तरफ से टूट जाएगा। टीम वेलोसिटी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था उन्होंने, वो यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, लेकिन एक बढ़िया अल्टीमेट क्लॉड की तरफ से गए हैं। फ्लिकर का इस्तेमाल, एमएम को फिनिश ऑफ किया और मौके का फ़ायदा उठाया वहाँ पे। वो मोबिलिटी उनके पास और इस मोबिलिटी का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाते हुए सीधा यहाँ पे खत्म किया एमएम को। अब गए हैं सीधा लॉर्ड की तरफ। यहाँ पे थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी टीम को। अगर टीम को कम वापस यहाँ से अगर वापसी करनी है, तो उनको अब अपने जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलने पड़ेंगे और कोशिश यही रहेगी कि ये लॉर्ड अगर किसी तरीके से मिल जाए, तो उनकी एक परेशानी जो है, वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी यहाँ पे। देखते हैं, फिलहाल के लिए तो मैवरिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन देती हुई, लेकिन मार्स वो बच नहीं पाएंगे यहाँ पर। बहुत ही कम एचपी में थे, उनको इजीली फिनिश किया यहाँ पर क्लॉड ने। ओह! कोशिश की बेबीलोन की कि वो किल मिले, ये देखिए उसके साथ साथ लॉर्ड ले लिया। टीम वेलोसिटी भाई ये जानती है कि गेम को कैसे पलटा जा सकता है। इवन दो अर्ली में ट्रेड उनका बहुत बुरा था। डिफरेंस अगर आप देखेंगे मैवरिक के अगेंस्ट अभी भी बुरा है भाई, अभी भी इतना ज्यादा कुछ लीड नहीं लिया है उन्होंने, बस लॉर्ड लिया है और कुछ स्ट्रक्चर्स बॉट लेन पर वहां पे क्लियर किया बेबीलोन ने। तो ये दिक्कत हो रहा है क्योंकि क्लॉड आपने छोड़ा था और क्लॉड के अगेंस्ट आपने लिया क्या, ग्रेंजर। अब ग्रेंजर डैमेज देता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्लॉड की तरह तो नहीं दे पाएगा भाई। टीम फाइट में अगर आप देखोगे क्लॉड का ज्यादा लाइक यू नो अपर हैंड रहेगा, एंड दैट्स द रीजन अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। और क्लॉड ने भी देखिए फ्लिकर लेके खेल रहे हैं, तो फैटल लिंक्स आप पकड़ सकते हो उनको एक तरीके से, बट बीएमआई का इस्तेमाल वो एज अ डिफेंस भी कर रहे हैं। बेबीलोन बहुत ज्यादा सतर्कता पूर्वक पोजीशन वाइज अपना गेम को बहुत अच्छा किए। जी, बिल्कुल और गेम को जिस तरीके से कंट्रोल वे में किया हुआ है, इवन लॉर्ड भी ले चुके हैं अभी। लॉर्ड को भी यहाँ पे रोका जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि उनकी जो होली शील्ड है वो ना टूटे, लेकिन यहाँ पे बचना पड़ेगा। फ्लिकर का इस्तेमाल किया, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे निकल चुके हैं ग्रॉक और यहाँ पे अब दिक्कत आ सकती है क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे आपका यूटिलिटी जो है वो यूज़ हो चुका है। एमएम के ऊपर प्रहार किया जाएगा। ड्रैगन यहाँ पे आएँगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन पेट्रीफाई को पड़ेगा। कर्स टच का इस्तेमाल और उसी के साथ ये पैसिव ड्रैगन का लगता हुआ क्या फिनिश होंगे, कोची रहने वाली है जी, बिल्कुल पीछे से आएंगे। गोस्ट वहां मौजूद था, अच्छा खासा डैमेज टैंक को उसी के साथ विनिविर का अल्टीमेट लगेगा, उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया है। 2 बंदे और ये फाइट जितनी ज्यादा चलेगी ओह उतनी ही ज्यादा वाओ। नुकसान, पूरी टीम वाइप आउट और उसी के साथ टीम वेलोसिटी ने इस मैच में अपनी वेलोसिटी वो हासिल कर ली है और आई थिंक वो सीधा एंड की तरफ जाती हुई दिखेगी। क्या ये एंड होता हुआ जा रहा है? लग तो ऐसी रहा है सामने की तरफ कोई मिनियन नहीं है, 1 मिनियन की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। बेस की तरफ प्रहार और उसी के साथ बेस के ऊपर लगा दिए भैया बारिश और उसी के साथ मैच को फिनिश ऑफ किया। मौके की तलाश पे फिर वही कहानी हो गई एसटीजी की, एक मौके की तलाश में थे और वो मौका मिला, लब का मैच को पलटा और अपनी टीम को सीधा विजय भूमि की तरफ ले जाते हुए बेबीलोन। क्या ही बेहतरीन एमएम खेलते हुए, एक भी किल नहीं दिए इन्होंने। क्या एकदम उम्दा गेम प्ले आता हुआ टीम वेलोसिटी की तरफ से। पढ़ के तो आप विंटर शैडो और विंटर घोस्ट के लिए आए थे, लेकिन सिलेबस के बाहर जो है बेबीलोन आ गए और उन्होंने खिलवाड़ रच दिया। यही यही मैं बोल रहा था कि लाइक इट्स नॉट सो इजी टू टेक डाउन वेलोसिटी, इवन दो यू हैव अ ट्रेड, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक देम आउट, बट एकदम से लाइक एक छोटी गलती और तुरंत मैच पलट गई। एंड लक का भी साथ था वेलोसिटी का, लाइक छोटी गलती नहीं बोलूंगा, बट टरेट उन्होंने सिक्योर किया था, लक नहीं है, इट्स एक्चुअली मैक्रो वाइज प्ले। उन्होंने स्ट्रक्चर सिक्योर किया था भाई, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लाइक मीनियंस उनके भाप पे आ गए। टाइमिंग ऐसा था कि उस तरफ से मीनियन का वेव्स नहीं आया उस टाइम, तो 1240 में आता है एक वेव, तो वो नहीं आया। तो
दैट्स द थिंग ना भाई कि लाइक ये लक नहीं है, ये उनका स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस था। उन्होंने स्ट्रक्चर लिया था पहले से, उन्होंने टरेट टॉप का और बॉट का क्लियर किया था जो उनको लेट में हेल्प किया। तो ये इसीलिए लाइक टरेट बहुत ज्यादा मैटर करता है गेम में। बट वेल प्लेड जी रेजी एज वेल एज उनीमारू। उनीमारू ने बहुत ही अच्छा खेला इस मैच में विद दैट अल्फा। बट क्या कर सकते हैं, हर गेम में एक विनर होता है, एक लूजर होता है। तो विनर यू नो हु गॉट इट, इट इज टीम वेलोसिटी स्पोर्ट्स। दोनों गेम और दोनों गेम बहुत अच्छे गए, लेकिन एक एक मोमेंट में गेम चेंज होता हुआ भी दिखा हमें। तीसरे गेम की ओर जाएंगे, मैं एससीजी सिंड्रा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं आप सबके साथ मिलने के लिए फिर से। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ अलगैम्बो स्पोर्ट्स में, और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट इन्फो अबाउट न्यू टूर्नामेंट्स फ्रॉम अलगैम्बो स्पोर्ट्स आप सबको मिल जाएगा डिस्कॉर्ड, इंस्टा और यूट्यूब चैनल पर। तो हर जगह जो है आप जुड़े रहिए, ताकि आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने टीम के साथ पहले जुड़ेंगे दूसरे टूर्नामेंट्स में। थैंक यू।
Good, hello, hello. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back again at the mobile warm-up class series. And this is going to be the day number one for this week. Again, the matches were going really interestingly the previous few matches, but we are back again with another two new teams. This is going to be another best of one series, so that new teams also get their chance to come up, since this is almost kind of first come first serve. So let's go. I'm your caster Peachy and I'm joined by Ash today. Hello Ash, how are you doing? Yo, 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 it's so fun casting out the last two games because you know what happened, Peachy? The game was so good for the losing team. They were about to win the game, but a sudden mistake and the whole game shifted around to them as a loser. And that's why, really, I really feel pity for those two teams. I mean, they tried their best, but what can we say? Once you're taking out that crown, that base, you're the winner. So right now, Valiant Goals versus BIT. Bad is in town, but you know what, Pichi? Valiant Goals have been known into this community scene right now, into the Algambo community scene, I'll say, because they have played a lot of scrims, a lot of tournaments hosted by Algambo Esports. So far, I have known like their playstyle is kind of totally dependent onto the micro. They don't go to the macro section more. They try to torment out the opponent side. They try to get more and more kills in the early phase of the game so that their trade will be higher than the opponent side. And in the end, when you have like higher trade, higher goal lead, massive amount of economical lead, then eventually you get the turrets as well as the macro objectives. So that's how Valiant Goals do the things. But baddies in town, first time I've been seeing them into the scene right now. I don't know much about them though. This Phobius pick coming out from them might be the X factor because we have seen the same Phobius literally carrying the whole game for the game number one for Prajwal. His name was Prajwal, was playing for Team Aura Incubator. He played so well with that Phobius. So let's see what will be against this Phobius. Oh, that's a nice pick coming in here. Counter. Yep. Much needed actually, given the fact that BIT are trying to go towards a bit of tankiness as well. I do believe we may be able to see something like a Leomod popping off onto the jungle, but as we are seeing a Willy, the chances are getting very, very low for BIT. But hey, they are yet to pick up true heroes. An assassin might be a good thing, but it kind of depends on how they will be trying to give the setup for the jungler. But as of now, that's going to be a god into the mid lane. He does have the fastest clearing time as of now onto the mids, and he has been doing so well in the meta despite having no mobility to him. But for the side of Team Valiant Goals, look at them. They have picked up a glue. They went for the glue into the Rome. That's another thing. But at the same time, a Rome glue is good, but it might not be the best thing to opt here. I don't like it because it's kind of squishy in the early phase of the game, and also cannot give you that proper setups like Grok or Atlas or maybe Gatotkacha. But still, like it can hinder out the backliners, so that might be the reason they went for this glue pick. But at the same time, like Pichi, this Valir and Terizla both are kind of a counter for the Phobias because Valir will constantly gonna slow you down, as well as Terizla gonna lock you down with that penalty zone. So obviously, like this two picks is really a counter for Phobias as well as for the God. I feel like because somehow God can also be get tracked by that Terizla as well as this glue. So far valiant goals are kind of you know taking those picks which can easily hinder out the backliners, but let's see if they can pick something into the finish as well, because you need something into the finisher. It's not like you have to hinder them every time. You need to take down them as well, so maybe a fanny could be the option here, or a Suyu, but I believe Fanny should be the best option because Suyu is banned. And even if it was open and you could have taken that Suyu, the Phobias would have given you a lot of, you know, taunts. True that. And on top of that, look at them. I am kind of not a big fan of a glue onto the room for one reason, that your team might be getting abandoned during the team fight. But since Wailing Ghouls do have a Terizla onto their side acting as a secondary tank, EXPs are always, especially those tanky EXPs, are always acting like that. So
I think for Wailing Wolf, they might be having a bit of an easier time, especially the marksman and the mage. But as for now, Wailing Wolves are trying to go towards that Leo mod. Now, the Leo mod, perfect fit right here, but the slows from this god is going to be so annoying that I'm pretty sure they are going Oh, to think twice. That isn't the pick that I want to go. But hey, it's a Melissa coming in. Looks like Wailing Wolves are really trying out new heroes now. And that is actually a good thing, but at the same time, there is an assassin jungler, the YSS, onto the side of Team BIT. Now, kind of curious to see what kind of a gameplay that they will be bringing, since for them it is mid to late game, and as for Valiant goals, early game can be a little easy breezy with the help of a lead. Yeah, of course. And at this point, I believe like this Melissa pick can be the you know X Factor kind of thing, because I was not hoping that Melissa to come in here. But let's see how it's gonna work against this Claude. Really sorry, I'm having a little bit of throat problem. Can you please continue, Pichi? Let's go. As of now, this is the draft, ladies and gentlemen. And with that, we are into the land of dawn. There you go. We love to see what kind of a gameplay both the sides are Yeah. really gonna go in for. BIT versus Wailing Goals. It's a best of one series. Only one can take away the glory. Let's see what will be happening. Baddies in town versus Valiant Gold. Who will be the winner? That's the main question. But right now, who will be having the first blood? Will it be Baddies in town or Valiant Goals? Because somehow, look at the glue. Confident about his slam onto the early phase of the game. He knows that he can give out that invasion potential as well. And look at the Khalid as well. I mean, he does know you have that little bit of skimmeter, sand skimmeter, which can help him to goes and check out the jungle area of Valiant Goals at this moment. But Claude against a Melissa, need to ask this about Pika, like against a Claude for that Melissa. What do you think, Pichi? I don't feel like it's a good pick, because Claude is kind of not gonna go and attack you kind of nearer. I mean, physically not gonna attack you. No, he does have the artillery. So that's the thing. Like, I don't feel like Melissa is the best possible thing against a Claude. True, though, it does have problems, but at the same time, they do have enough items and a little bit of a snowball. That might be it for this Melissa as of now, really having the upper hand against this Claude, given the fact that the blue is quite proactive onto the bottom lane, but losing those HP to Miracle ain't it as of now. But on the drop lane, first blood coming in, oh. it's gonna be Celestial Twilight. Crazy enough, BIT do get it onto their hands, but hey, Romba going for the engage. Phantom Steed comes into the way, but it will be the final blow coming out from Shees here. They're gonna go for the double kill, and in the meantime, we're gonna see the Mono Shocker emerging as well. The pursuit goes in there. Kyoshi falls down fast, double secure onto the Romba. He's gonna go for the triple and just won it out. Oh my goodness, he finds his way back to the safer side. Rizla gonna go for the engage here on the turtle side, but he's getting hindered. But look at that god, he finishes it up. He finishes it up. He doesn't let that Waleed to go back into the base, and before he can reach out, before he can recall out, he just fall down immediately by that god. crazy damn SBIT really having the upper hand with 4 kills onto their hands. They are trying to get as much as possible. Now that the first turtle has been already taken to, teams will be moving forward to give side mob as much as farm as you can. So far, I do believe there is just a level difference already coming up between Kiyoshi as well as side mob, given the fact that you are on the YSS, okay, force penalty zone on top lane. Yep, just a poke though. Oh, he goes in with a flicker. My goodness, he want to engage here inside the tier in full pursuit. But there is a beautiful outplay coming in. Oh my goodness. One hit, just one hit with a turret. He got the reason though. Right now, it's not be the best way, but Ovi is in a very bad position. He's getting ganged. 3v1 situation. He's gonna go for the infernal pursuit, but gonna get punished down with a shutdown out of him. Kind of overextend the fight, and that's the reason he just got punished there. Oh my goodness, mid lane, they are trying to take it out as quickly as possible, and with that,
Goal shield being up is going to be a little bit of a hindrance for both the teams to go and just push it side by side. But Cybob is all alone as of now. Should not be doing that. But for the side of Team Wheeling Goals, that is just too much damage as of now. Ash, look at that. Now, Wheeling Goals really should play it a bit safe though. Let's see. For now, okay, that's a nasty blow onto the Kyoshi. Miracle goes down as well. Adza following up into the skirmish for Baddies in Town. 7 for 4. Baddies in Town are really playing well, but no, it got to a 2 for 2 trade with Terizla following up into the mid side. He finds a kill there on the guard easily. And now the turtle is kind of open for the side of Team Valiant Goals, and I don't feel like there will be a contest from BIT. Okay, so far, Aromba does have a flame shot onto a blue. That is not working out. Like, I do believe there might be a bit of a brawl. That items have been coming in. Not quite sure. He wasn't able to clear it out as quickly as possible. A flicker would have been appreciated, but Valiant goes. They need to start taking those kills. Look at that. Onto the bottom lane. There comes Batsar as well. He's trying to find it into the back lanes. Gets immobilized. Okay, Skimmeter, that is a beautiful, you can say, Reasing Sandstorm for the save. I mean, he knows the glue is onto him, and that's why he just pulled the move. And now the glue need to return back into the base. But for now, Valiant Goals, they're really into the hunt of more and more kills, because they're probably losing it out. And Leomord not aware of that gank. On a shocker? No, not going to release it out because it's kind of far away from him. He knows that he cannot trade it out with that Leo mode. He does have that Phantom Seed, so he can easily flew away. Down to the top side, they want to take out some structure though. But down to the bot, it will be Baddies in Town who will start it. Okay, so far so looking good, but there you go. They go in once again. They are trying to get as quickly as possible. One more kill might be coming in. Nah. Mystic Gush, and then you just got captured by that slam, grab, and then you fall down immediately. With that, Melissa, oh my goodness, finds a kill onto the Miracle, and they're going in double for Kyoshi. Oh, it's a chance that they might gonna finish it up into the mid tier 1. But at the same time, look at it. Mound Shocker gonna release it out as soon as possible and gonna take out those minion waves. Because you need to defend somehow. Phobius is getting tormented. He got grab on him. You wanna take down them with the Infernal Pursuit, but before he can cast it out, he falls down there. Valiant Goals. They kind of, equalize the trade, and now they're in a lead. Crazy, look at that. Wheeling Goals were not getting any kills. They were the ones who were very behind on gold as well. But at the same time, they managed to just pick it up. It's with just one team fight. They just needed to give Kyoshi a bit more chance with those kills, and he is able to get that. And on top of that, both the sides, a lot of resources has been spent, but Valiant Goals, they are going ahead with the goal. Look at them. They are getting those gold. They are getting those kills as well. The chase is crazy. Let's see. They're gonna chase them out onto the top side, and in the meantime, look at the Valir from the backline giving out the follow-up, and as soon as possible, he's trying to give that constant slowdown, constantly poking down the each and every members of Baddies in Town at this moment. This is the thing, like you have the experience, even though we are onto the Melissa, which kind of not having an upper hand against that Claude, still we're gonna shine because we know how to synergize out those team fights, how to tactically counter the side of Team Baddies in Town in team fights. Even though we get lower in trade in the early phase of the game, we can manage to pull it back into the late game. That's what happened in the last game as well against Team Velocity Esports. I mean, they managed to pull it back even though they were kind of low with the trade. But onto the top side, a tier just got secured, and now they're going for another structure. Let's see if they can secure it as well. Look at the Phobius and the Claude. They're clearing it out as soon as possible. But Ish and Shin with the Khalid onto the cross map play, they want to take down the bot tier 2, and nobody's there to defend it up. But I really love how the Khalid is giving them the space, especially for side mob, but into the mid lane. I feel like that's going to be the next target right here.
Just goes with the Raging Sandstorm. Fights is happening and games happen in the mid, and that is there is love with the penalty zone. P Gaming falls down as well. Kingsley into the hand of Kyoshi. He's getting a lot of damage though, but he somehow managed to go back. But out of the top, pleasing to it years. Melissa gonna use the ultimate penalty zone connected. Oh, he got the BMI there. He's at a very less of health. Can he survive? No, he can't. Miracle goes down immediately with Khalid in a very bad position. Taken down here with that slam, grab. And Melissa might be the one. No, Glue will be the one giving out the final blow here. 4-man down with not a single trade given into the hand of Valiant Goals. Given into the hand of baddies in town. Valiant Goals doing so well at this point. Lord is up. This is going to be the first lord of this game, and on top of that, BIT have been really pushed towards their second turrets. Now that does means that they have to clear those lanes as quickly as possible. Sidebob really tried to do it, as in go for the split push, given the fact that he does have the mobility and has the chance to get out of the way. But as of now, they do realize that they don't have any security into the river area. Baptiste, I'm not quite sure why is he going alone. He's looking quite low. Okay, looking quite low as well, and it might be the thing like you wanna try to contest that Lord, and that's the reason he went there. But it's fine. It's a lot for the Sutter team Valiant Goals here. Let's see if Sidebob can do something at this point with that Ishan Shin. I mean, he does not fall down for a single time, but he's not giving out that much trade as well. 105, and if you're gonna talk about the assist, it's like a Mountain Shocker assist. With a Mountain Shocker, you get a lot of assist, and that's the reason he's having it. Before now on the top side, Holy Shield might gonna get popped out, but no, that's a nice defense coming in. They wanna take down their tier 1, and it might be the time to take down it as soon as possible. And oh, that's a good stun coming out from the god. He might gonna use that Mystic Gush. They're gonna take down the tier 2. Tier 2 might be coming in very, very soon for them, but before that, Wailing Wolves will be sweeping away every single possible creeps in from baddies in town. But as of now, there might be a trade coming in. Melissa looking quite close. The Mystic Gush out to her was just a final blow. Crazy though. This time around, the god really had an easier time. No one targeted him, especially the Terizla. Let's see what will be happening here. It's more like another Lord is needed to finish the game. Valiant Goals, what they will do, or are we gonna see BIT coming back into the game just like last 2 games? Because just one fault and we have seen everything got shattered, everything got changed, the whole scenario of the game getting changed in the last 2 games. But right now, let's see VG can do it or not. Let's go. Let's see what is it going to be, because both the sides do have enough chance. But only one can win. So far, it is Wailing Goals once again with the domination onto their hands. 13 kills plus the goal difference of 1,500. That's definitely increasing onto their hands. But Badzer, not a great position, but his mobility, his sand will be helping him to get out of the way. Enough vision for the team, then that is just enough to make them decide that are we going in for a fight or not. But Wailing Goals are really ready for a fight. I don't think so, but look at the Terizla is engaged. You just look at the damage coming in there. Oh, that's a Phobius going in, but he falls down immediately with the Gwynny striking in as well. And there you go, Melissa finds a double, and it will be a triple trade coming out for Valiant Goals, but suddenly the wind got shifted. Melissa falls down with a Claude charging in with that BMI blazing great combo into the tier 2. It falls down as soon as possible. Valiant Goals secure the structure. They're gonna go for the inhibitor here. Using that Phantom Street, Kyoshi goes in. You're gonna strike down the turret, but in the meantime, second Lord is up. Okay. Terizla really waiting it out for the team as well as for Lord as well. Now the second Lord is up, and Wailing Goals were really good on taking away every single turret as of now. So for them, this slot is going to be a breeze. While no Holy Shield, that means at least 2 of the inhibitors will be falling right here. Let's see what is it going to be for BIT. This is going to be only one chance for them to get a good clutch steal onto the Lord and then proceed with taking away all the possible. But wait a minute, penalty zone.
Penalty zone used behind the bar. It will be the raising Sandstorm. Lord secured. Mega kills got onto side mob. And there you go. Grab onto him. He's getting tormented, but behind the scene, it will be the mob. Oh my goodness, that Mystic Gush. And it really have a lot of burst, but doesn't matter. 3-man down from the side of Team Bad is in town. And every lane is kind of synced right now. So let's see if they can take out an inhibitor before the Lord march in. Now with the Lord, there's already a bounty onto the Leomord. Look at that. Lord marches in. There's only God. Miracle. He has to get out of the way. Dodging the lead. Is it going to be end? Mystic Gush onto the Lord, trying to make sure that the Lord will be taken down. And yes, that's a very successful defense. But what about the minions? Side mob really trying to do his best to make sure all the red minions are out of the way. 2 inhibitors down as predicted, but the minions won't be stopping him. And there is the pause coming in here. It might be from the side of team, Valiant goals. Valiant goals. Not Valiant goals, but the Yeah, BIT, Baddies in Town. Yeah, because I don't think Valiant Goal will ever go for a pause here at this moment because they know they're doing great and maybe VG is not having the net issue. It might be BIT, but let's see. It will resolve as soon as possible because we are here for the fair gameplay, trying to give everybody the fair chance to play. So they're gonna fix it out as soon as possible and come back. But before that, Pitchy, the Melissa thing, which we're talking in the early phase of the game, that it might not get work because Claude is not a counter for the. I mean, Melissa is not a counter for the Claude. But somehow it works so well right now, and it is giving a lot of damage. I mean, look at it. Like he took the Lord, he's engaging in the team fight, and suddenly disparting each and every members of Team BIT. So do you think like this kind of off pick sometimes really secured a big place in a game? highly possible though, given the fact that they do have a YSS onto their hands, but how Valiant Ghouls are moving around, that might be a bit hard for them. Despite, having a glue on a wrong spell, yet they are having no, problem right there. They are easily, breezily having a time with the glue as well. So I do want to see how BIT will be making sure to give a comeback. Talking about the items so far, oh, okay, Teresla is already going in for the mix, but before that, P Gaming. P Gaming, you're gonna go for the engager, Mr. Gus from the behind. Grab onto him. He goes in there. Melissa finds the kill onto P Gaming. Not only that, they're going on to the Claude as well. Oh, before that, side mob goes down. Double for the Melissa. That's a good start for Valiant Goals in this. After the second Lord, I'll say like 2-man down and the minions are synchronized. They might gonna take out that top inhibitor as well. And for now, it's more like Valiant Goals have a better side. They have a better chance to win this game, but who knows? There might be something coming up soon. Mystic Gush, you cannot find that Claw God flickered out into the beautiful defense. He goes back into the safer side. Lord is about to march in to the land of dawn in just 25 seconds, but before that, they really wanna take down at least 2 to 3 members so that they might finish it out. That's what Valiant Goal's looking for. It's not that much easy. You need to take the Lord first, I believe. Let's see what decision BIT will be taking to see and make sure they also get a comeback. But as of now, for them, they need to get bad set to give a very good set, and on top of that, the damage should be pulling through. The Mystic Gush onto Melissa or even the Valir might be a good decision, but for Valiant Ghouls, look at that. The pokes is just too much for bad, sir. Okay, let's see. Let's see how it goes for both these sides. They're trying to take them out. Lord secured as soon as possible from Kiyoshi. And now they need to wait. They need to freeze the lane. They need to synchronize the lane properly so that the sync will help them to take down the base, to give out a mighty push onto the side of baddies in town. What is it going to be now that the Lord is coming in from the middle lane, and that's going to be a little
strong a lot than before. So BIT will have to clear those lanes as quickly as possible. And on top of that, they need to make sure that they do get those heroes out of the way as well. They are tanky. They are going in for the all defense. Mystic Gush popped out very early on. Celestial Twilight will be melted out a bit, but goes in for the penalty zone. Penalty zone, and from the behind, the engage is happening as well. They're locking down the base, but before that, Celestial will falls down, but that doesn't matter. They're locking down the base. It's the Melissa who is attacking onto that turtle crown, and it will pop off as soon as possible. And Valiant Goals will declared as the winner for the third game of weekly Scrim class. What a game it was! I mean, I'll say well played, team BIT. They tried their best. They had the early phase of the game into their hand, but somehow it is Valiant Goals who managed to dominate them out throughout the game, and they managed to win the game as well with a difference of 1:2, like in the kill ratio, 22:11. I mean, obviously, this was a nice game from Valiant Goals, and this is why I tell every time that experience does matter. Valiant Goals does have that huge experience into competitive scene. If you're gonna compare it out with this BIT, that's the reason they managed to succeed here. But with this, Pichi, we need to take a short break. We'll come back soon for the next game. Newcastle will be joining up. Pichi will be there. So don't go anywhere, guys. We'll be coming back soon. It's just 2 to 3 minutes break. So stay tuned and let us know that how you're feeling about this weekly Scream Crash.
Hello. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. After a short break, we are back again at the MOBA Warmup Clash series. And this time around, I'm the one giving the introduction, not Ray. So, hello, Ray. Welcome right here. How are you feeling? Well, I'm definitely feeling excited. I just saw Zushin Savage and I could not be any happier, buddy, because that is all I needed. Zushin taking 5 men. What? But yeah, what I'm looking forward to, of course, obviously, is going to be this itself as well. Mobile Warm-Up Clash Series Scrims, where we can see new flavors and new things, right? So let's see what happens as we dive into this game. We're going to be Let's. having Team Eternal Esports on this side and Team Clutch God on the other side. I believe Team, what do you say? Clutch God actually has the first pick. So, yeah, I think this side definitely should be switched. But other than that, hmm, the bands is going to be Yes. the Kadita followed with the Marcel. Okay, so far looking quite good. With the Kadita, but at the same time, I do believe there's going to be a bit of heroes that are still open. Harley might be one of the heroes that could be setting onto the ban list, onto the last as well. I do believe we did get a Harley ban, so why not go for it? So Phobius is also another good hero though, as a ban, because a lot of teams have been going in as for the first pick. Yeah, it makes sense. He has been something that a lot of people have been prioritizing quite a bit, even banning it out. But for now, we're going to be going. Obviously, the Zushin gets banned out. They do not obviously want it at all to be in place. So for now, we'll be getting the first pick pretty soon. It can be anything ranging from, like you mentioned, the Phobius to even the what was that hero? God damn it! It can. I just think it's going to be Phobius, honestly, because I mean it's a safe pick. Other than that, what can you go for? Yeah, there we go. A marksman would have been good, but at the same time, it is like a very, very not good onto this kind of a team composition. So I kind of want to see for the Phobias, what are they going to go? For Keto band, that means that's going to be a little, uh, problematic since he is also such a very good hero onto the EXP line. Is it going to be a Charisma once again? It's going to be the Baksha followed through with a Claude. Oh, gotcha, jungle. I have a Yeah. feeling that, yep, that's gonna be the jungle roam, very rare instances, but EXP, that ain't happening. And if it does, the team really has to pull out something really crazy, such as the Suyu onto the jungle. So hey, the Suyu is open. Or even the Leo mode. Yep. Leo mode is Oh, just way safer bet. Suyo requires a little bit of a commitment, but the Leo mode does not in any shape or form. So obviously they go for that. Follow through with the Harriet. They're going with very, meta and common picks, and I won't be surprised if we get a Eve right here because I feel like that's going to be the most, meta. It's just meta. There we go. The Eve popping in. oh my goodness. Steve is also another good pick right here, but I do believe that Leomord might be easily reaching towards the back lane. So that could be it. Uh, Especially if there's no, something like a Sora coming in onto the back lanes. I mean, as an EXP laner. So I'm kind of curious to see what kind of a EXP laner would be popping off for Eternal Esports, because that is also quite important for the mates to make decisions. As of now, that's going to be back onto the banning. We got the Valentina. That means the Sora might be a good choice. You're right about that, Peachy. But they're going to be following through with the Valentina, and I believe they might be going for possibly a setter, which is going to be the Alice. There we go. We get the Alice coming in. And right now, the last two bans are going to be a deciding factor if they want to ban out more mid laners or do they want to ban out more utility. So at this point around, do they want to ban out? Yeah, they're going to ban out the horse. They don't want double horse because this is something that a lot of people go for with a combo. And the last ban coming in from the side of course, Team Clutch God. It's going to be an interesting one itself as well. What is it going to be? I believe it can be something along the lines, like you said, the glue or the soda.
Thora should be a good option right here, or either of the teams going in for a Marcel as well. Because one thing, if Valentina is getting bad, that just indicates probably a Thora or even a Marcel being picked off. Eternal Esports, what is their choice? And they did anticipate a Thora onto their hands, which Clutch God did not get that message, but they have just this chance to pick it up. But what if they don't and they go in for a jungler? That would be really crazy, though. They're going to be committing to the Tesla, like you mentioned, Peachy. I mean, you mentioned it. It did come, but it came a little bit later on. Yeah, Considering right now they have so much of a tanky front line, right now Clutch can definitely commit to a Valir or a Lilia, because I feel like that is going to be the most, anti-tank strategy to follow through. And to be fair, they can go Zatian, but Zatian, I feel like she doesn't have enough HP-based damage to really combat this two, right? So a or Valir, there we go. Gore also would have been a bit annoying though. So I was kind of expecting Clutch Oh God yeah, to you're right. get up the God because hey, uh, the Lord can't come up ahead very quickly, and the Bakshia would be just roaming around, and the slows would be really annoying for them. They needed the slows, and as for Eternal Esports, they do have the slows, but it is not as good as the Valir as of now. So I have a feeling that the EXP lane should be another interesting one. I mean, not the EXP with the tank. Oh. I love to see that. The new Atlas that we're seeing in the recent MPL ID, where Yeah. of course one team saw a downfall while the other rose to the big leagues, the biggest leagues itself. So yeah, the Atlas has been appearing quite a bit in the MPL ID, and Eternal Esports, they definitely have been putting their time to research and study. I wonder who their coach is, but yeah, Clutch God, I'm curious how their draft, this draft, it feels very standard. I'll just be honest. It just 4vs Leomord, Harid, Valir, Minotaur. This is like the most standard draft you can think of. This is just 5 heroes that you put together, isn't it? This That's feels a true. bit something you'd play on a ranked game. Not a bad thing. Not a bad thing. This is scrims. Maybe you're just Yeah. practicing, right? But it does feel a bit too standard for my taste. Eternal Esports, they do add a little bit of spice with that Atlas. This is a triple tank composition with only 2 DPS. Looking forward to it. Ladies and gentlemen, welcome into the Land of Dawn. It's going to be the MOBA Warmup Clash series. We're in the 4th match of the evening, and it's only going to get better. Let's see. Of course, we have the last match after this one. Let's see if we'll have a good finale before it. But for now, Peachy, what's up? I know I should have asked you before how you're doing. Let's see though. I mean, Eternal Esports, they have been really trying to poke it all off, but Leto, even the EXP laner has jumped in, and that is really crazy. A bit of pokes coming in Oh, for good read. fading there, looking quite low, but yeah, is right there as well. But again, I kind of consider the Atlas a bit squishy though. Like, I agree, he's a tank. But when it comes to the team fight, unless he goes in for such a surprise tactic with the flicker and the fatal links, that is just not it for now. Yeah. But the advantage, funny enough, the advantage is that he's facing Minotaur, who's also kind of the same thing. Both of these Yes. rumors are not exactly the tankier ones. Something compared to the Gatotkacha or the Hylos, or even if you compare it to the likes of a Lolita or Grok itself, these two on defense, on HP scale, basically are much weaker. But it's mainly due to the fact that these two can prioritize the magic items. One being the fleeting time. On the other side, you have the Flask of Oasis. So obviously, it does give them that bit of edge. Atlas with the setup potential, which is going to be insane, considering they will be able to catch up the Leo mode and the Phobius. Harith does have the Purify, so that is something that they gotta take into consideration. Other than that, that's gonna be the turtle spawning in. Team Clutch God right now, they might be eyeing that turtle soup as soon as possible, but you know what they say, nobody knows turtle soup better than the tortoise himself. That's gonna be the Bakshia, so let's see what it's going to be. The Vali should have gone to the top lane though, but Vastia, as of now, wait a minute. He's getting caught off, so just up the way. He's trying to get off. Minted just jumps in as well, and that really upped his survival chance. And as of now, Eternal Esports will be having a bit of 50-50 with Clutch God into the river area. Absolutely, Peachy. They're gonna be the Atlas with Fatal Links coming up pretty soon. Not level 4 yet, but he does use the S22 as much as possible.
We're going to be getting the zone out here. It's going to be the penalty zone. Here comes the team fight. But Hero will still get the turtle. Gets punished immediately by Masarap. And so does the Phobius fall as well. Double kill secured. And they immediately get a 0-3 on their favor. Turtle gone, but who cares when you get 3 people down from your opposing with a tremendous goal lead secured into your hands. That is 600 gold, and the total, as much as if I'm correct, it is around 200. That is 3x of what you want to get. But Clutch God, though, they still have a good amount of chance to come back. A lot of resources have been burned out onto the last team fight. That means the next team fight might just not come in as quickly as possible. As for Yaya as well as Minjay, both of their ults is just going to be a little bit far talking about the cooldown. But Minjay, though, not level 4. Yeah, that was a bit of a disadvantage. But even though Team Clutch God had a disadvantage onto their hands, and yet they pulled up with a turtle, at least. Absolutely, Peachy. Right now, obviously, talking about the itemization, it's going to be the Harris trying to get the Starlium site as much as possible, as soon as possible, into the top lane though. Oh, Bakshia with a great Tornado Eye, gonna be might be able to get the Leo board because he's cornered by the 3 tanks. Never underestimate 3 tanks. They hit like a hammer, obviously, because one guy definitely has the biggest hammer in the Land of Dawn. And right now, here comes a Fatal Links. It does land into a Minotaur, but like we mentioned, he's pretty squishy. They try to take him down. He barely scripts it off with 1% of an HP and goes back for now. So far, looking good for Eternal Esports. And on top of that, let's not forget, Eve's the ultimate range is really crazy that the team Clutch God has to get out of the way. They'll have to, make the chance to be not immobilized as well. That is just too much for them. And for Doofy, though, props to him knowing that the enemies onto the map are missing and just not blatantly attacking that minion and not giving himself the farm. Precisely, Peachy. And right now, this is going to be the second turtle of the game. It's 0-4, the side of Eternal Esports. Esports still into the lead, precisely. But okay, Masarab gets the War Axe, and so does the Demon Hunter Sword. They're really making sure that Minjay does not get any type of upper hand. It's a Minotaur, but she can only make a set if she's able to come into a team fight. There's going to be the... Okay, Phobius goes in for a flicker. That was a little bit of a mistake, though. This turtle goes into the hands of Ooze, and there's going to be the RWM coming up with the penalty zone. We have to blatantly wait and turn back, and going to be able to take a kill. Maybe not. Ooze and takes a kill. Minjay falls into the hands of Last. They're still going to be going in strong, and with this, they will go back with 3 kills. I thought it's 2, but it's actually 3. 0-7, that's the James Bond lucky number. And Eternal Esports, they put the pressure in the mid lane. While the bottom lane is still gonna be looking vulnerable as well, because there's gonna be 2 people in the mid lane. They're really trying to do something about it, but the Valir cannot really defend it. My goodness. Like Harith. Bot lane Doofy, though, with the Sound Force, he's trying to survive it out for losing. If you could have just a second more, he would have survived. He would have taken at least the Bakshia, but that was just not it. Bottom lane might be going down as quickly as possible, but hey, let's talk about how Phaeton is all alone while Clutch God is at the bottom lane. Great rotations being made so far from the side of Eternal Esports. They're able to capitalize on the mid lane turret. They're trying to capitalize on the bottom lane as soon as possible. It is looking pretty roughed up. They might be able to do it. On the other side of the map, I think they do have the capacity to perhaps push the top lane a little bit more. They might be follow it up through as soon as possible, but of course, there's going to be the Phobius still being present there. For now, 0-8. They're really making sure Minjay does not really get the choice to go for a dive in right now. Top lane is going to be the Wuzen trying to find something. Doesn't really find for now. Looks like they might be going back. Or Masarab. He's looking for something, but doesn't really find anything. As of now, let's talk about the star of this match. The Eve Doofy duo goes in, Phaeton as well. The Horsey came at the right time, but the timing just went away. Wait a minute, Blazing Druid coming in to clear those lanes as quickly as possible and trying to lower them down. But the shield, though, that is looking quite good. Phaeton, so low. Yaya comes in for the help as well. Eve really missed a spot or would have gotten Doofy as well. And that just really gave the law towards Eternal Esports, flickering out of the way. Phobius, he needs to get out of that lane.
He's surviving. Look at that. But no, killing spree for this Bakshia. I just noticed his name. It's kind of weird. It's WSY Sieta. Hopefully, it sounds like like you know this coupe concept Survivor. cars. Yeah, like that is such a feels like such a complex Western name. But yeah, for now, the side of course, Eternal Esports have a massive 7,000, building up to 8,000 goal advantage into their favor. Claude completing their goal and staff is going to be able to get the dual combo of the HP based damage as much as possible. Harris still kind of struggling with trying to build up the, you know, the Feather of Heaven as soon as possible as well. On the other side, Minotaur going for the Flask of Oasis as first item. I don't like that because you should be getting defense when you're kind of, getting a lot of pressure towards the top lane. We do get a little possible engage. Here comes Masarap! Gets the ultimate. At the same time, pulling in with the Fatal Link's gonna be able to take down Minze. And so does Fall here though. Back into backline. Gonna be blazing duet, taking down. Mega kill secured for Wuzen. Sorry for a little bit of a tongue slip right there. A lot of things happen on the top lane. But the side of Eternal Esports, they're just humiliating the side of Touch God right now. 0 for 13 is not giving them a single chance to capture a single kill. That is true though, but I'm still right there. Not the poke though. Holy moly. That is just too much coming in from both the Eve as well as the Terrorist love for them, for the side of Team Eternal Esports. They have not given any slip ups as of now, and Clutch God is sitting on the 0 kills. That really says that Eternal Esports, they are all in for a one-sided game as of now. Hero, he's trying to go back, but at the same time, Wooz and being a tank, he can sustain all of that. Wait a minute, the Minoan Fury as well, but no, that's gonna be the Phobius falling down. Fate still trying to do damage. The immobilization, the Purify, one by one, they are taken down. It's a triple kill for them, but first kill secured at the 8th minute of the game. Clutch God is almost wiped out. Almost wiped out. The only Deliomor was the sole survivor of the engage. And right now, looks like even he's going to be in trouble. Here comes Masarap with up another penalty. And that's a wipeout. We manifested it, I guess. But yeah, Eternal Esports, they definitely did. And right now, 1-18. The only kill they got is due to the fact that Wuzen really pushed to get another kill secured. And right now, the Lord is going to be wide open for the side of Eternal Esports. And they're really trying to go for it. And I believe Clutch God is in no position unless they really want to make some form of a clutch play. Clutch play is really possible if they, push this match a bit towards the late game and try to take down Fatian as quickly as possible. Other than that, I don't see any scenario working out for them, given the fact that the front laners such as Minjay as well as the Phobius are getting melted down. Fatian is farmed enough. 607. Look at him. He's able to mill those minions as well and those creeps in just mere seconds. So this is going to be a bit problematic. While Fatian 6-7. Yeah, that's true though. And Eternal Esports are trying to get inhibitors on their hands. The Holy Shield is still there. It's not 12 minutes yet, but Lord. Oh, no. In the mid lane, it's actually gone. They might be actually able to do something about it. Yaya looking for a Fatal Links to be coming in pretty sure. Who's on the other side looks like he's already done and gonna be able to get the Phobius itself, but he gets taken out by Third. On the other side, there's gonna be Fate and able to get the kill. No, it's actually gonna be lost. Putting in the pressure as much as possible. Mid lane minion coming in too. Bottom lane, trying to put the pressure, but looks like this is where they're kind of making the choke a little bit. They lose another member of their side. Eternal Esports, they lose another one. But Fatan with a godlike, blazing to edit to the back and gonna be a little bit maybe close. Plus for does he get it? He might be able to do it. Yes, he does. Goes in for a double kill. Might be able to end it right here. They do have the minions. Fatan with the clutch. Might be able to push it. They do have another inhibitor. Valid pushes down the minions. They should just focus on it. But for now, Fate a little bit too low. Will go back to the base to heal up. Or maybe just regen. Oh my goodness. Clutch God. They really hold it out so beautifully, but at the same time, they have lost 2 inhibitors, which is a problem. But hey, talking about the goal difference, it is massive as of now. 10k, but itemization wise, look at that. Roadblock meteor into the hands of Claude already. Did you see that? Masarap
Penalty zone that purple buff. Not sure Oh why my he did that. God. They're gonna be going after Minze. Flicker's out of their trouble, and they'll go back. What was that, Masrab? Why penalty zone on a purple? And the ways people have to do to get to secure a buff, you know, Why does he purple? that happens so much in the rank games. Oh, You know, I whoa, feel Wooten is bad. Look at that. Wooten, he's probably typing something to his teammate. Like, like what is wrong with you, buddy? Why? they are just waiting it out. Look at them now. Lanes have been cleared from every single, as much as possible. The minions would be relentless, trying to come in, trying to take down the crystal. But the Lord, though, will this be the final blow? Oh, they are trying out something. Look at that. They're trying to take a They're group being chilling. photo. They're being chilling. Yeah, they're taking a group photo. It reminds me of the school days. But yeah, they're taking Yeah. a photo. Oh, why no recall? What a bunch of dummies. You're supposed to recall. You lined up perfectly, and there's no recall. You don't know BTK? Come on, guys. But yeah, jokes aside, Eternal Esports, they're going to be able to get the Lord. Clutch God right now, they're just waiting for Eternal Esports to be making those same mistakes. Like I will mention it again once more. This is not a game for Clutch God to win. This is a game Eternal Esports to lose. They have to make the mistakes for Clutch God to be getting those, you know, advantage. For now, though, let's take a look into the itemization. Of course, the Harriet has been completing the Feather of Heaven, I believe, with the Starlium Sight. Might be building up towards the Holy Crystal. Oh, okay, he actually went in for the Divine Glaive into the first item. Phaeton, on the other side, has the Winter Crown. Crown. I am kind of excited for the Winter Crown play though. I do want to see that, like, at least a maniac coming in. Yaya trying to go in for the fatal links, but he's trying to, make sure that Fading Dave will be using up his skills. But no, Minje, there goes the Phantom with the flicker. That's gonna be Phoebus falling down along with the volley. They know Blazing duet! this is where you make a play with the Winter Crown. Double kill for that. Legendary on legendary, and the Lord targeting the Crystal. Doofy unable to do anything. And for Eternal Esports, what a play. They get a victory on the one-sided game. A very strong start. Like I mentioned, the side of the draft of the team, uh, Clutch God, it was too basic, I would say. Hey, Phaeton with the 911, 6'7, 911. This dude is definitely saying something. But yeah, this match 100% one-sided, at least for the majority. In the end, they were able to capture a few kills, but I believe it was mainly due to the fact that Eternal Esports was basically, you know, what is it? God damn it, Like, overextension. Yeah. yeah, they were overextending, and on top of that, they needed a bit of a proper counter for the Bakshia as well. If this wasn't a Bakshia or even something like an assassin such as the YSS, maybe they would have gotten the same result, but at the same time, they wouldn't have gotten the dive in, especially for Fatian to give that kind of a gameplay with zero deaths on his hands. Yeah, very impressive. I love to see a Claude that is slippery, and this was a well executed match. Love to see a good domination, but hoping that the side of Clutch God can definitely improve and work on it, and we'll be hoping to see them next uh, next day of the scrims, not tomorrow, next day of the scrims, and hopefully they come back. For now, obviously, we got to take a break, ladies and gentlemen, but make sure you don't go anywhere. Thank you for all the viewers that tune in on the scrims to learn together and grow. So make sure to stay tuned for the last and final match of tonight's MOBA Warmup Clash. We'll be right back.
Well, hello, ladies and gentlemen. Welcome back again at the MOBA Warmup Clash Day #1 for this week. And with that, we'll have to see what we have. Looks like it's going to be the Will of D versus Almost Pros. I do remember Almost Pros though. Like, in fact, both the teams were here at least once or twice, if I'm correct. But I'm your caster PG, and I will be joined by Ray today. Hello, Ray. How are you doing? And welcome back. Yeah, welcome back to you too. It can go both ways, right? I Yeah. did not expect we'll be back together, but hey, it's a pleasure to be here again once with you. Why am I saying like we didn't do it this just 2 minutes ago? I am a dumbass sometimes, but hey, looking forward to this game. It's going to be between, like I mentioned, Almost Pros and Wheel of D. They are very frequent on this mobile warm-up clash, and they also participated on the the recent tournament Battle for Crown, hosted by none other than Algambo Esports. I believe they were in top 32 as well. So and that's why they feel very familiar. And I just want to shout out to a very creative name for the side of Almost Pros. They got Mari Biscuit. I don't know, I don't know why he went for that one, but hopefully, my friend, in future maybe you might get Mari Biscuit sponsor. Unlimited biscuits for life. You're settled in your old age. Let's see though, but as of now, the bans are really fast enough for Keto Zushin finding a permanent spot on the ban section. And this time around, it's going to be a Sora. Sora, I have not seen his gameplay in such a long time. And on top of that, despite his adjustments, I feel like he's still a viable hero under some conditions. But hey, Almost Pros bans out the Valentina in just saying that they want to take the Marcel away. Okay, since the Zushin is gone, Marcel should be the sensible ban. Unless okay, I think Marcel should definitely be banned. It's scrims, but Marcel is someone that you can test a lot of compositions. So giving it away does give them a little bit of a leeway. It's better to just let it go, and they do. And right now, the first pick right now is going to be for the side of Almost Pros. Let's see what it's going to be. It has a lot of options. They can go for Suyo or Phobius like the last match. Maybe even what is open. I swear to God, there's so many heroes in the meta right now. I get jumbled up. That's true. And they could It go for a Harriet as well, but that is just when you ban out the carry into the ban section. So as of now, that's not going to be none of the heroes that we mentioned. But a Zatian, crazy though, almost putting emphasis on a mage. Love to see that. Zushin is gone, but at least Zetian is here. The Z Chinese waifus. Yeah. But yeah, on the other side, the clock is ticking for the side of Wheel of D. What do they respond with is going to be a big question. Do they go with something really extraordinary? Okay, Yu Zhang, we see it often, but what? Go for Xavier? Xavier? In this comfort, economy? comfort pick most likely. And I do remember them only playing the Xavier as well. Ooh. So maybe we are going. But you know what? Theory crafting. It is kind of viable against the Zatian. Zatian does have the range, and the Xavier really closes out the range, but needs level 2 for that. Yeah. Both of them have good range, but like you mentioned, Zatian, she has that range all the time. Xavier, he gotta use up the skills twice to, get the stacks to reach that. On the other side, both of the mages do have global ultimates. Zatian, though, it's a drone strike. It's going to be landing on all of them. On the other side, though, Xavier is obviously hollow purple. So we're going to be seeing that through the map. Unless he does not want to go for that, he goes for that Beyond the Cloud skin. But come on, you got to pick up the Honored One skin. You got to be the Honored One. But yeah, for now, we're going to be getting the pick onto that Xborg. And this is the most obvious carry ban I'll ever see. Look at that. Bro, Fredrin and Grok. Like, if that was like, in place of the Xbox, then understandable, but Xbox being picked off as the jungler. So that really says that they kind of want to melt in, but they kind of missed out on a chance of taking blue now, so that is out of the way as well. And as for making things a little bit easier for the team fight, the Phobius is out of the way as well. And as for the marksman, I believe there is like a little less emphasis though, but I love there's like a variety of heroes actually setting onto the bans.
They follow it with obviously the Kaja and the Phovius. And the follow through is going to be what is it going to give you? I mean, they Um, gotta get of course, the Golena and the Roamer. So they do have a lot of options. They can go for, okay, it's going to be another Minotaur coming in. A great choice on paper, but on match against a Grok, I feel like we'll be falling short unless the side of Will of D is just, baiting out skills of almost pros. Because once the Grog is over with his tectonic stars, he and his team will have to just close off the exit path, which is kind of really hard for the members such as the mage and the marksman to do that. But hey, Fredrin not onto the jungle, and that's gonna be a Suyu. So Will of the they have fallen onto the trap. Beatrix with the Suyo, and that obviously means one thing. I love to see a Fredrin EXP. Honestly, lately I've been loving it. Do you know the best thing about it? It's the bonks. The bonks are the best part. And I think to combat it, they pick up the Guinevere jungle and send Xbox towards the XP lane to shred the Fredrin. But jungler, oh, no marksman strategy for Will of D. Oh, wait. My bad. Yeah, there's going to be Yuzhong gold lane. Yuzhong gold lane, got it. Boy, you need that Yuzhong gold lane. Xborg, items, no items. He's going to dish out 2 damage. Yuzhong, he gotta get that gold, man. So send him to that gold lane. If you're gonna be doing this, send him to the gold lane. Let's see if that's going to be the case or not. But hey, this is the draft, ladies and gentlemen. Which draft are you guys leaning towards? And with that, into the land of Dawn, here we go. It's gonna be the Expo Jungle and Mingo Flamingo going on to the goal lane. Crazy. There we go. Land of Dawn. Hey, what? Oh, my bad. Unfortunately, he doesn't have the skin. I'm sorry, my friend. You're going to be going with the Dawning Light. But hey, even the Xavier basic skin is pretty beautiful. I actually prefer like no skin Xavier because, that white cloak, it got that aura, man. But yeah, let's see. It's a best of 1 series. Last match of the day, ladies and gentlemen. Of the night. Let's see how it goes. Oh, wait. Guinevere gold lane? Oh my goodness. We are in for a treat. Yes. Definitely, though, but Nicolas, as of now, is having to see that retribution a little bit late, but onto the mid lane, we might be able to see a first blood coming in while his Puraga armor is healthy. But for Mari Biscuit, quite already taken down low. No first blood yet. Not surprising, though. Not surprising. Considering their early game on both sides is not exactly something I would say captivating. Both of them gotta get that, level 4 power spike. Oh! Suyo? So he might, but no. Mari Biscuit too deep inside. Well, Mingo Flamingo did not go in for that. But the Xbox is also trying. But Filmy X thus gets the first blood. There you go. A great choice because you are overextending that to under the 5 minutes. The damage of the side that you're on is going to be really great. So she was going to go down. In the mid lane right now, the Beatrix took away a few minions. Not sure what is that rotation, Beatrix. Zayden was coming back anyways. You just denied your mid laner from getting level 4. That is a bit questionable. Yeah, I mean, I get it. You need a little bit of an extra gold, but not your middle laners who has not even hit that level 4 just right before the turtle. Like, wait a minute, onto that Bellion with the retribution, thus gets it away. But will he be able to get out of the way? He thus gets petrified by the Herman. And he falls down. Nicola is also looking quite low, and he gets the bonk on his head. There you go. It is going to be Leo. Herman as well as Dread are trying to make sure to get out of the way. One is out, but one is not. But Mari Biscuit, I'm not liking that you're once again trying to overextend the fight. Absolutely. I think almost pros are kind of losing their own battles by, taking the fight a little bit too ahead. They gotta go back. They gotta take some time to basically, bonk.
but sadly, you're still level 6. Not enough HP items to really dish out that maximum damage. Let's see though, Zaytian's gonna be a little bit problematic since she has gone level 4 recently, and the Fury of Phoenix is just going to be too annoying as of now. Belin thus gets interrupted, but he doesn't have any. Talking about the Mino, he doesn't have any backup, so that's going to be unfortunate that they cannot extend the fight as of now. But bottom lane, there's a high chance how the teams are moving in. Zeng already in position along with Razor. They'll have to make sure. Oh, I'm not liking that. Look at that. They do dodge it off. Billion as well as Maribiski comes in. There you go. It's going to be Mingo Flamingo getting targeted. Red Phoenix is just not on the position. The lasting insanity jumps in, not with the stacks. You need the stacks to go in for the maximum number of damage. 50% of the HP chunk down for 3 members right there, but for Will of Tea, that's not it. Kinda do like that. I mean, Guinevere is the goal lane, so you have to commit to it. I do like that they went for the shotgun combo with the Beatrix. It is the strongest burst in the game. But, hey, here comes Guinevere with the revenge. She basically said, you're not the only one who can do it. And they immediately get it back. So yeah, this is what I was talking about. Grok committed with a flicker, man. Like, a flicker, not too sure about that, mate. But look at that, Herman in the mid lane. Getting a little bit of pressure right now. Xborg goes back, doesn't have the frag armor. Here comes the Fedrin with a little bit of a taunt right there. Appraiser stretch, not to get ready. Does need the stacks to be getting up. Xborg on top. Not Xbox, sorry, Black Dragon on top, looking for something. Herman gets retribution inside the turret. Takes a lot of turret damage, and that's going to be a kill. Herman gets taken down by their own overextension. Xborg losing out a lot of Firag armor. Not really exactly able to fight more long than as expected. Here comes the Beatrix with the Nibiru's passion. Takes out. And right now, they're going to be 3 down. And almost pros. They are 5-4. Will of D, they're kind of struggling right now. Their resources are going to get thinned out as much as possible. And with this, we take a step back. Almost pros are definitely looking like they're almost pro in this game. Oh. And with that, almost pros having the time in that mid lane as well. They are able to clear it very quickly and then move towards trying to annoy Nicholas. Look at him. Look at that. His buff taken away in just plain sight, but Razor onto the bottom lane. Thus gets a perfect 1v1 in his hands, while there are walls surrounding of Will of D. What are they going to do? Given the fact that Dread Phoenix has to jump in, give out a set, but in that moment, he himself is getting very squishy. Bottom lane does get taken down. The side of Will of D, they're getting pressured tremendously. Mid lane, looks like Fredrin is already going in very deep. He wants... Is that Fredrin? No, my bad. That is... Grok. Oh, Okay. not like Okay. He flickers out of the way. He is safe as of now. But as for Leo and Herman, he jumps in with the Black Dragon for Petrify combo comes in. There's a bit of a knock-up there, trying to find the crumbs from the back lane. So goes in, trying to go for the Mingo Flamingo. But Filmy X is also taken down very low, flickering out of the way. Dawning Light comes in. And yet, barely takes 2 hits from the turret. And that is it. But for Razor under the front lane, triple kill with that shotgun as well. Easy mid lane for the side of Team Almost Pros. 11-6. Will of D. They're looking... Huh. This is going to be last hurdle coming in. Will of D right now, they're basically quite a bit behind. Let's take a look into the itemization. I want to see how much they're able to follow it up. It's going to be the Guinevere trying to go for the damage build with the concentrated energy, trying to build up the Starlim Scythe. But I don't understand why the Minotaurs are going for Flask of Oasis first item. I mean, it is decent. It gives you heal, it gives you save, but you need to remember Flask of Oasis gives you shield based on your level. Early game, you're not getting much shield, and you're just becoming very squishy on top of already being squishy.
You gotta go for the defense, man. But here it comes, the Black Dragon on top. Oh, Oh, brilliant. Yes, once again takes away the turtle. That's gonna be the last turtle. But Leo, though, he's sustaining so much right there. Goes into the bomb, doesn't get set right on time. But Brilliant, as well as Razor onto the back lanes, they get one. At least one, that to the main member, Filmy X. He was the one who's taken up too much kills, and now that he is getting taken down first under a team fight, that is not looking good. 12 to 7, 9 minutes about to be. And oh wait, can I see the itemization again? I literally forgot to check how much is Xavier actually. Yeah, thank you. Xavier glowing 1 for his item, understandable, but I don't think it Needed. was preferred. There's not much, you know, lifesteal in front. Could have Yeah. honestly went for a lightning truncheon and tried to burst out at least a Beatrix into a backline with a dawning light. On the other side, Zetian, she's already done, almost done with a lightning truncheon or wishing lantern, I believe. Why are the items same, you know, recipe? On the other side, Skypress is secured, Blade of Despair, and Malefic Gun into the hands of Beatrix. So the side of almost pros looks like it's almost done for them. You know, oh, Flicker Violet Requiem comes in. They try to take Mari Biscuit, who's looking quite low. Flickers out of the way from the Minoran Fury. Filmy X trying to be in a very safe position. He's trying to stop it out. He does get stunned up by the Phoenix of Fury. But Delian takes it away. Once again, this Viraga armor being blown off because of the lasting insanity. Herman jumps in. He tries to take Razor down. It is going to be going into the hands of Nicholas. Herman, his shower residue is just helping him to sustain on those team fights. But Bellion, though, he was quite deep into that turret. He literally went on towards the Nexus, which is crazy, though. Because I just noticed that the, Razor, literally on 7 to 8,000 gold, while Bellion is on 4,000 gold. As a jungler, I believe it is time to die less. Die less. that is funny. Die less. But yeah. Die less. That is a funny word to say. But yeah. For now, 16 to 9. Oh, 16 to 9. Okay. Almost pros on a massive lead. No questions asked. Lord spawned in. What do they do about it? Let's see. Right now, sorry, Nicholas, he's on 4, that's right. Yep. Wise, it's not exactly bad, but it's pretty much affecting his farm quite a bit. Look at that, he's still level 11. He could have matched Suyo quite a bit, considering like Suyo also overextended quite a lot in the early phases. But yeah, anyways, both of them have the same amount of deaths, that's the reason. But anyways, looks like Frederick, he wants to go for the bonk. Oh, he does that. He's trying to get Filmy X, but at the same time, Bellion onto the front lane takes away the Lord. And as for Mari Biscuit, for the Fury of Phoenix, that just pauses. Razor, he's trying to get out of the lasting insanity, but at the same time, no. That range started. Bellion with a triple kill. Look at him. Will he be able to get a Mania, given the fact that Filmy X is just right there? He goes in, flickering out of the way. Bellion thus gets immobilized, taking 2 hits from every tower. The Violet Requiem thus misses out once again, and he is out of the way. But no! The dawning lights right on time. It is Filmy X with 1 score in his hand. Exactly, Peachy. And right now we're looking forward to almost pros, almost ending this game. It is quite early considering it's only been 12 minutes, but it does feel like the game has dragged on for quite a bit. I believe it's because there has been a lot of unoptimized team fight we've seen. A lot. Oh, Beatrix. Not liking the position, will be taken down first, and with that, the Minoran Fury, a perfect one. But hey, Zeng is right there. Herman also trying to jump in, but he realizes the Lord is going in along with Leo. Might be taking down Nicholas, who thus gives a ton. Mari Biscuit with the Fury of Phoenix there, them being all together, just thuns up all 3 of them. But as for Zeng, he's looking quite low. There comes Bellion as well. So Herman having the discipline, he knows that he cannot go in as of now, Nicholas.
is right there. Marius kept getting targeted, will be taken down, and Herman will be taken down into the hands of Billion. But trades on trades, one member taken down for another. But once again, it's gonna be Leo who's looking quite low, takes down Fred Phoenix, and goes in for a triple. Are they gonna go in for a maniac? Because Flamingo, he needs to get out of the way. He does get it out, but no, the bomb is it, and he makes sure to give up his own life for a maniac. What a way! They're gonna end the game or what? Because Herman, 4 seconds left. Does look like they have the possibility of ending right here, Peachy. The Oh. base is completely wide open. The Grok stops them from even coming by blocking the base. It's a game over. Almost froze. They get the game on their hand. Oh my goodness. Leo taking down the maniac and the MVP as well. That too on the EXP lane. Crazy. Indeed, Peachy. Honestly, was not expecting to see that. I mean, Federer EXP, honestly, I'm going to be honest. What am I even saying? I'm repeating, but I'm putting out. But yeah, the thing is, anytime we see heroes that are not conventional, we don't see them in their lane, I feel like they win. Sometimes, like, you don't see Nana often, but I can bet you the next time you see a Nana in a Pro Esports tournament, the Nana team will win. It's mainly because I believe people take that decision calculating something. They have a plan, which kind of goes to show that they were ready, more prepared. Rather than if you go for just counter picking, it kind of goes to show. It feels like you're responding to your opponents, which puts you in a submissive spot. So yeah, I believe that is something to consider. But with this, ladies and gentlemen, we are done for tonight's matches. That was 5 back-to-back scrims that we just had at MOBA Warmup Clash Series. I forgot what the week is, but I believe we're at what week? 30, 20, I think somewhere around that. But anyways, Yeah. with this, we come to the closure of tonight. But make sure you stay tuned for the next scrims update. Make sure you follow us on social media. It's the same handle everywhere, Algambo Esports. I believe our Discord server links are on the description. Make sure you have subscribed if you haven't. And if you're obviously a tournament player that is still aspiring and watching right now to learn, make sure you join the Discord server. We have the scrims every week, not a weekend, on the starting week to kick things off. So, ladies and gentlemen, make sure to take care. We'll see you guys on the next stream. Good night.